सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू टू प्लीज स्टैंड अप एंड put a huge round of applause as the chief guest of this program, Oil and Gas, is arriving. Shri Anurag Jain, Sir, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. May I request our devoted dignitaries to kindly grace the dais as I respectfully take their names. Shri Anurag Jain, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. Dr. Pallavi Jain Govil, Director General of Hydrocarbons, Government of Madhya Pradesh. Shri Sanjay Kumar Shukla, Principal Secretary, Mineral Resources Department. Shri Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, DIPIP. Shri Ajit Kumar Saxena, CMT Moil. Shri Rajiv Maitra, Partner Deloitte. Shri Ashish Vaishya, Chairman CII Madhya Pradesh. Shri Anurag Chaudhary, IAS, Managing Director, Madhya Pradesh State Mining Corporation. I would like to call Mr. Indradeep Naik, sir, to please be seated. Please come on stage and grace the dais. I would like to call Mr. Indradeep Narayan, sir, to please come on the stage and grace the dais. Thank you so much, sir. It's an honor to gather here today as we embark on a pivotal journey towards realizing Prime Minister Narendra Modi's visionary goal of Viksit Bharat 2047. This conclave represents a remarkable opportunity to explore the vast potential of our state mining, oil and gas, and mineral-based industries, truly the backbone of development in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, often referred to as the heart of India, standing proud as a powerhouse in the nation's mining landscape. We are the only diamond-producing state and lead in the production of vital minerals such as manganese ore and copper ore. Additionally, we hold the second position in rock phosphate production, crucial for our fertilization industry, and rank third in limestone, an essential raw material for cement. Our contributions extend to coal production as well. We are proudly ranked fourth, underscoring our critical role in India's energy security. Madhya Pradesh Mining Conclave 2024 is a two-day event. Today, technical session encompassing digitization, exploration, and best practices in mining will be held, in which domain experts shall be sharing their knowledge. Tomorrow, we will be discussing opportunities in the state, followed by a roundtable conference covering contemporary issues pertaining to mineral-based industries. Prominent industries shall also address the gathering. During the conclave, discussions to felicitate setting up of mineral-based industries will also be held, which will give a long way in enhancing state revenue, job opportunities, and overall development of state. On the sidelines of the conclave, an exhibition showcasing mining products and latest technology used in mining and exploration activities is also being held. The conclave will bring together the industry leaders, entrepreneurs, subject experts, geologists, professionals, and other stakeholders of various states to share knowledge, discuss challenges, and explore innovative solutions for the sustainable development of the mining sector. As we move forward today, let us unite our efforts and insight to unlock the immense investment opportunities that Madhya Pradesh has to offer. May I now invite the dignitaries on the dais to come forward and join hands in lighting of lamp ceremony. In our Indian culture, every auspicious work is started with lighting of lamp so that the happiness, peace, and prosperity reside in the work and our lives.
गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य It's a moment to extend reverence to our special dignitaries and welcome them with a beautiful bunch of flowers, that is a bouquet. Now I would like to request Shri Anurag Chaudhary, Managing Director, Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, to welcome our chief guest. I would like to request Shri Anurag Chaudhary, sir, to please welcome our chief guest, Shri Anurag Jain, sir, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. Please put your hand together. Dr. Pallavi Jain Govil, Director General of Hydrocarbons, Government of Madhya Pradesh. Shri Sanjay Kumar Shukla, Principal Secretary, Mineral Resources Department, Government of Madhya Pradesh. Shri Raghvendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh. Shri Indradev Narayan, CMD, MECL. Shri Rajiv Mehta, Partner, Deloitte. And Shri Ashish Vaishya, Chairman, CII, Madhya Pradesh. Thank you so much, sir. Our revered dignitaries on the dais, senior officials from the echelon of Government of India, Government of Madhya Pradesh, delegates, stakeholders, friends from press and media, ladies and gentlemen, we are deeply appreciative of your kind presence and offer you our most grateful welcome in Bhopal, the city of lakes, and also in this beautiful Raja Bhoj Hall of Madhya Pradesh Tourism, Kushabao Thakre International Convention Center. Now for the welcome address note, I would like to call Shri Sanjay Kumar Shukla, sir, Principal Secretary, Mineral Resources Department, Government of Madhya Pradesh. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Sanjay Kumar Shukla, sir. मध्य प्रदेश में और भोपाल जैसे सुंदर शहर में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सर, भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन्स पल्लवी जैन गोविल जी, भारत सरकार के ही मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के MECL के MD श्री इंद्रदेव नारायण जी, हमारे कॉलीग, हमारे सहयोगी श्री राघवेंद्र सिंह जी जो प्रमुख सचिव हैं उद्योग विभाग के, हमारे नॉलेज पार्टनर और हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं राजीव मेहता जी,
CII मध्य प्रदेश के वर्तमान चेयरमैन आशीष वैश्य जी। तो मंच पर हमारे सभी सेक्टर के एक्सपर्ट और बहुत ही रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करने वाले ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। इसके अलावा हमारे बीच में माइनिंग और जियोलॉजी सेक्टर के कुछ बहुत ही ख्यातिनाम, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही दिग्गज यहाँ उपस्थित हैं। IIT तिरुपति से श्री अरुण, IIT धनबाद जो पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हुआ करता था वहाँ के मोहम्मद दानिश जी, धनबाद के ही सहाद्र सिंह जी, श्रवण कुमार जी। इसी प्रकार से जियोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ कई लोग जो आए हुए हैं बाहर से, मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है, सब लोग यहाँ आए हैं, सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से ऑल्टरनेट ईयर इन्वेस्टर समिट होता है और इन्वेस्टर समिट में सभी सेक्टर की बात होती है, टेक्सटाइल, फार्मा, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, अन्य सेक्टर, IT सेक्टर वगैरह वगैरह, पर्यटन। लेकिन जैसे बहुत सालों से अपने देश में कुछ सेक्टर ने अपनी अपनी एक प्रैक्टिस सेटअप की है, जैसे दिल्ली में ऑटो शो होता है, बेंगलोर में कुछ एग्जीबिशन होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश माइनिंग के क्षेत्र में एक उभरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ राज्य है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया कि माइनिंग के लिए अलग से कॉन्क्लेव करें, जिससे हम केवल माइनिंग सेक्टर में जो संभावनाएं हैं रोजगार पैदा करने की और देश के GDP को आगे बढ़ाने की, उन दोनों पे बात हो। इसके साथ ही ऐसे कई एलिमेंट और मिनरल हैं जो रेयर अर्थ कहलाते हैं या प्रीसियस मेटल कहलाते हैं, उसमें उनके वैल्यूएशन के अलावा देश की जो स्ट्रेटजिक डिफेंस सिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी है और कई प्रकार के और भी जो हमारे स्ट्रेटजिक सेक्टर कहलाते हैं अनेक कारणों से, उनमें हम कैसे योगदान दे सकते हैं। जैसे EV की बात चल रही है, तो EV के लिए बैटरी चाहिए, कुछ अन्य कॉपर चाहिए, लिथियम चाहिए। तो ऐसे भी जितने भी इस प्रकार के सेक्टर हैं उनमें माइनिंग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये आज उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो 2 दिन के सेक्टर में आज ज़्यादा बातचीत होगी तकनीकी विषयों की, जिसकी शुरुआत होगी एक्सप्लोरेशन, सर्वे और उसे फिर उसकी कई स्टेजेस की ट्रायल टेस्टिंग होती है, फिर तब जाके वो कमर्शियल उसमें कन्वर्ट होता है। फिर उसमें ये भी देखना है कि फॉरेस्ट का नुकसान कम से कम हो, पर्यावरण पे हम सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करें, ये सब सारे एस्पेक्ट है। तो ये नॉलेज शेयरिंग आज हमारा काफ़ी होगा। कल हम लोग जो इसका कमर्शियल और बिजनेस एस्पेक्ट है, कल हम उस पर फोकस करेंगे, जिसमें बिजनेस की संभावनाएं और जो 2 चीज़ मैंने रिपीट की, रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन और GDP में कंट्रीब्यूशन, इन दोनों पे फोकस करते हुए मध्य प्रदेश एक अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट जहां समय पर आपको परमिशन मिले और हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहें कि जब भी आप हमसे बात करना चाहें, टेलीफोन पे, VC पे, फेस टू फेस, तो हमारी टीम, हम लोग उपलब्ध रहें आपके लिए। ये पूरा एक हमारी कल्पना है। मुख्य सचिव महोदय ने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से यहाँ के लिए समय निकाला और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर का टेक्निकल बैकग्राउंड है और सर मूलतः टेक्नोक्रेट फिर ब्यूरोक्रेट हैं। तो हम लोगों को ये इस बात का आनंद है कि जब हम कोई बात उनसे कहेंगे तो उसको सही उसका अप्रिसिएशन हमें मिलेगा और उसका सही मूल्यांकन भी हो पाएगा। तो वी आर लकी टू फॉर्चुनेट टू हैव हिम इन आवर मिड्स टुडे। और जो भी सेक्टर एक्सपर्ट यहाँ आए हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि हम खूब अपनी पूरे नॉलेज को शेयर करें और जो लोग मध्य प्रदेश पहली बार आए हैं वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों की जो वार्मथ हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे और पक्की बात है कि फिर वो यहाँ वो काम भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे और आगे रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वेलकम एड्रेस समाप्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके शब्द हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। India is witnessing a major transformation in the mining and mineral sector. This development has been driven by a series of structural reforms initiated by the government, ensuring fair and transparent allocation of mineral resources, boosting production and sustainable mining.
Critical minerals are the foundation on which modern technology is built, from solar panel to semiconductors, wind turbines to advanced batteries for storage and transportation. The world needs critical minerals to build these products, which is why their supply chain resilience and has become an increased priority for major economies. It is the vision of our Prime Minister that people of the area from where minerals are extracted should also be directly benefited from mining. The reforms in the India's mineral sector have not only increased production, but have also made the sector more transparent, competitive, and beneficial to local communities. The nation's mining sector is now poised for a brighter and more prosperous future, one that is inclusive and that leads to an Atmanirbhar and Viksit Bharat. How it has been done for that, let's check the video. So I would like to request our technical team to play the video on mining sector. मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, देश की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा राज्य देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है एवं विभिन्न खनिजों के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। मैंगनीज और कॉपर अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, रॉक फॉस्फेट में दूसरा, चूना पत्थर में तीसरा और कोयला उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पन्ना के मझगवां हीरा खदान में वर्ष 2024 में पुनः उत्पादन प्रारंभ किया गया है। यहां से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन का लक्ष्य है। साथ ही छतरपुर के बंदर हीरा ब्लॉक, जिसमें 32.2 मिलियन कैरेट का भंडार है, नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्थित मलांज खंड खदान भारत की सबसे बड़ी कॉपर अयस्क खदान है, जहां से प्रतिदिन 5,000 से 10,000 टन कॉपर अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये खदान भारत के कुल कॉपर अयस्क भंडार का लगभग 70% हिस्सा रखती है। ये खदान देश के कॉपर अयस्क उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बैतूल एवं छिंदवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एवं वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अधीनस्थ कई खदानें संचालित हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें सिंगरौली जिले की सासन कोयला खदान भारत की बड़ी निजी क्षेत्र की कोयला खदान में से एक है, जो कि अपने विशाल खनन उपकरणों एवं उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो राज्य एवं राज्य की ऊर्जा की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्यों में से एक है, जिसमें सतना, रीवा, कटनी, पन्ना, दमोह, नीमच और धार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रसायन उद्योगों में होता है। चूना पत्थर का प्रदेश में देश का मात्र 9% भंडार होने के बावजूद मध्य प्रदेश देश के चूना पत्थर उत्पादन में 15% का योगदान करता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयले, चूना पत्थर और अन्य आवश्यक संसाधनों के कारण भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, जो प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन यानी CBM राज्य निवेशकों और खनन धारकों को व्यापक सहायता प्रदान करता है एवं खनन परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न विभागों से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने में सहयोग प्रदान करता है। राज्य की प्रचुर संसाधन, अनुकूल नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ मध्य प्रदेश खनन उद्योग में निवेश और विकास के असीमित अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को साकार करने हेतु 2015 में
खनिज कानून संशोधन के साथ जिला खनिज निधि यानी डीएमएफ की स्थापना की गई। अब तक 7,531 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन विभाग खनिज ब्लॉक नीलामी में भी अग्रणी रहा है। आज की दिनांक तक प्रदेश में 78 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश को देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राज्य को जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा मुख्य और गौण खनिज नीलामी के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला है, जो राज्य के खनिज संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रमाण है। Now, for the presentation of investment opportunities in Madhya Pradesh, I would like to call Shri Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh. But before his presentation, we would like to play a video on industrial journey of Madhya Pradesh. India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities, and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers, and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho, and Jabalpur, making it future-ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single-window clearances, and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur, Gwalior, Sagar, That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit, February at Bhopal. Good morning. Madhya Pradesh, which is a state which can be termed as a diamond state. Madhya Pradesh is a state which can be termed as a land of peace and tranquility. मध्य प्रदेश जो अपनी नियति का स्वयं निर्माण करता है
ऐसे मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। माननीय श्री अनुराग जैन साहब, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, मैडम पल्लवी जैन, डीजी हाइड्रोकार्बन भारत सरकार, श्री संजय शुक्ला साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनिंग, श्री राजीव मित्रा साहब डिलाइट से हैं, श्री आशीष वैश्य साहब, श्री अनुराग चौधरी साहब, हमारे जो माइनिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे मीडिया के मित्र हैं और हमारे सभी प्रतिभागी जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं झीलों की नगरी भोपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मध्य प्रदेश वन संपदा से भरपूर प्रदेश है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो पूरे भारत का लगभग 1/3 फॉरेस्ट, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का 1/3 हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड है और ये भारत का करीब 8वां हिस्सा फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश में है। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया में और पाँचवीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। हमारा प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारा प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पे है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जैसा कि आपने माइनिंग की वीडियो में देखा था, सीमेंट, कॉपर, मैग्नीज, डायमंड प्रोडक्शन में पूरे देश में दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेट है। हम देश की जो स्टेट कैपिटल्स हैं उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी में हैं और इंदौर ने 6 बार से लगातार अवार्ड क्लीन सिटी का पूरे देश भर में जीता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारा ध्यान रिसर्च की तरफ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ लगातार रहा है और इस स्लाइड में हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में नेशनल इंटरनेशनल रेपुटेशन की बहुत अच्छी संस्थाएं हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में, RR कैट इंदौर में, एडवांस मटेरियल और प्रोसेस रिसर्च एम्प्री भोपाल में, रेयर अर्थ थीम पार्क भोपाल में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 14 संस्थाएं NIRF की रैंकिंग में टॉप 100 में हैं। 55 हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पूरे देश में दूसरे नंबर पे हैं। हमारे पास इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 1287 नंबर्स में और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस 1000 से अधिक संख्या में हैं। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास का है। GIS एनेबल्ड हमारे पास सिस्टम है जिसमें लैंड बैंक करीब 1.25 लाख एकड़ का है। मध्य प्रदेश में 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई की हमारे पास अरेंजमेंट है। 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स दिल्ली मुंबई, दिल्ली नागपुर, अमृतसर, कोलकाता, ईस्ट वेस्ट, ये कॉरिडोर हमारे यहाँ से होकर निकलते हैं जिसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस स्टेट है। करीब 31 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्योंकि प्रकृति के प्रति जो हमारी निष्ठा होनी चाहिए उसको देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी लगातार हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एक जो खंडवा में इस्टेब्लिश किया जा रहा है पूरे देश भर में सबसे बड़ा है। एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क है करीब 5 लाख किलोमीटर से ऊपर का। 5 एयरपोर्ट्स हैं, बहुत जल्दी एक और एयरपोर्ट रीवा में और बाद में दतिया में भी शुरू होने जा रहा है। 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान भारत सरकार का बना था उसमें लगातार कड़ी मेहनत करके अपने प्रयासों से बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि
हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को 3 साल का एग्जाम्शन देते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई इंस्पेक्शन और बहुत तरह के अप्रूवल्स, डीम्ड अप्रूवल्स की तरह से रहें, उसके हम लोगों ने प्रयास किए हैं। हमने बहुत सारे जो कंप्लायंसेस जो सिटीजन्स को और इंडस्ट्रीज़ को करने थे, उनको हमने कम करने की कोशिश की है। बहुत सारी ऐसी धाराएं जो कि हमारे अलग अलग नियमों में और एक्ट्स में थीं, उनको डीक्रिमिनलाइज करने के, जिसको कि आपराधिक न समझा जाए, ऐसा करने का हमने प्रयास किया है। पूरे देश का पहला स्टेट है जिसने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पहले 16 रजिस्टर्स श्रम विभाग में रखने पड़ते थे, उनकी जगह पे अब केवल 1 रजिस्टर पर रखने की आवश्यकता है। हमारा जो लैंड अलॉटमेंट का सिस्टम है वो GIS बेस्ड है। हम भारत सरकार के जो पोर्टल है उसके साथ सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं और कई जगहों पे हमने आपको सुविधा दी है कि आप अपना बिज़नेस 30 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे जो अप्रूवल्स हैं उन सबको हम लोगों ने काफ़ी सरल किया है और इस तरह से सरलता सहजता की वजह से हम लोगों ने इस सिस्टम से 11 लाख से अधिक एप्लीकेशंस डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, उनको हम लोगों ने अप्रूव किया है और 20,000 से अधिक डीम्ड अप्रूवल हैं इसमें। इसकी वजह से डिफरेंट सेक्टर्स में इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। सीमेंट, थर्मल पावर, कोल बेस्ड, सिरेमिक्स, स्लेट पेंसिल, जो माइनिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर्स, उसके बारे में माइनिंग डिपार्टमेंट और विशेष तौर पे आपको बताएगा, जिनको कि मध्य प्रदेश में बड़ी प्रमुखता से जिन पे काम हुआ है। हमारे जो पिलर्स ऑफ ग्रोथ में उन्हें कहूँ मध्य प्रदेश में, तो बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, शासन की लगातार मंशा रहती है, प्रयास रहता है और डिसाइसिव ढंग से मध्य प्रदेश शासन कोशिश करता है काम करने की। 100 करोड़ से ऊपर के अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कैबिनेट कमेटी में आपको कस्टमाइज पैकेजेस मिल सकते हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, जो माइनिंग बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, उनके ऊपर फोकस किए हुए हमने कुछ आपको यहाँ दिख रहे हैं कुछ संस्थाओं के नाम। हमारे पास स्किल लेबर बहुत बड़ी संख्या में है, करीब 43% पॉपुलेशन जनसंख्या हमारी वर्किंग एज कैटेगरी में है। स्किल के ऊपर हमने काफ़ी फोकस भी कर रखा है। एम्प्लॉइज़ का रिटेंशन रेट अगर देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत ही बेहतर है और शून्य मानव दिवस, नेग्लिजिबल मैन डेज लॉस, इसकी मैं जो कल्पना करता हूँ उस अवधारणा को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। और इन सबका निष्कर्ष क्या निकलेगा? चीपर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि मध्य प्रदेश में आपको बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलना है। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो ट्रांसपेरेंट है। इसमें प्लांट और मशीनरी में 40% तक की हम आपको उसका रिटर्न देते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बेहतर करते हैं तो करीब 50% की और इम्प्रूवमेंट, एक्सपोर्ट्स में अगर आप हैं तो 20% की और इम्प्रूवमेंट, और अगर आप कम इंडस्ट्रियलाइज एरिया, नॉन इंडस्ट्रियलाइज एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो 20% का और इम्प्रूवमेंट इस जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस है उसमें आपको मिलता है। पावर और वाटर रिलेटेड आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रिएट करने पे आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं, और इसी तरह से जो आपको पेटेंटिंग के चार्जेस वगैरह लगते हैं उसके ऊपर भी आपको सब्सिडी मिलती है, लैंड कॉस्ट के ऊपर भी है। तो बहुत ही अलग अलग, जैसा मैंने बताया था कि 100 करोड़ से ऊपर की हो तो कस्टमाइज पैकेज के लिए भी आप जा सकते हैं। मैं इन कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर फूड प्रोसेसिंग में, ऑटोमोबाइल में, फार्मा में, टेक्सटाइल में और ITES में ऑलमोस्ट देश और विदेश की हुज हू आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसी तरह से माइनिंग बेस जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनियां हैं जो विशेष तौर पे सीमेंट और दीगर सेक्टर्स में हैं, उनके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम। मैं आखिरी में मध्य प्रदेश के गान से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक बाइट में भी मध्य प्रदेश गान की लाइनें उद्धृत की थी। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। जय मध्य प्रदेश, जय हिंद। धन्यवाद सर। और एक बार मध्य प्रदेश के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि सर ने हम सभी को मध्य प्रदेश की सुंदरता, यहाँ पे प्राप्त होने वाले अवसरों के बारे में अवगत कराया और साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि लगातार 6 बार किस तरह से मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और अब मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए on the topic Petroleum and Hydrocarbon sector, I would like to request Dr. Pallavi Jain Govil, Director General of Hydrocarbons, Government of India,
एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल मैम के लिए। Good morning, everyone. Respected Chief Secretary of Madhya Pradesh, Shri Anurag Jain sir, my colleagues, Shri Sanjay Shukla ji and Shri Raghavendra Singh ji, senior officers and dignitaries on the dais, and all the invitees for this mining conclave, a very good morning to all of you. Namaskar. It is a proud privilege to come back to my home and have this opportunity to share with you the role of hydrocarbons in India's development, as well as to focus on the prospects of the development of hydrocarbons in Madhya Pradesh specifically. So I shall be brief and I shall not go into details in all the slides that my office has assiduously prepared. However, I will try to walk you through the policy which Government of India has put in place, as well as how we can do what we can do specifically for our state. So the hydrocarbon policy has evolved over the past more than 100 years into what it is today. There have been, since the discovery of hydrocarbon oil first at Digboi, after that, there has been first, initially after independence, the nomination rounds for which, for nearly 35 years, there was the exploration was given to our national oil companies, ONGC and Oil, and I'm happy to have representatives from our national oil companies also present for this conclave. Thereafter, when the private sector started coming in, so then there has been successive round of liberalization and ease of doing business has been brought in. From what is called the pre-NELP, which is the pre-new exploration license policy, to the NELP regime, which is the new exploration license policy, wherein there used to be production sharing contracts. But then, since 2016, a new policy was introduced, which is called the HELP, or the revenue sharing contract regime. And this is a successive ease of doing business measure of the government. It has simplified the ways the hydrocarbon exploration sector works and the way the companies can come in and bid out contractual areas and do their exploration production for oil and natural gas. There's also the DSF policy, which is the Discovered Small Fields policy, which basically aims that if the national oil companies are not able to exploit to the fullest potential the discoveries which they have made, they can give it over to the government, and the government can then offer it to other investors who would be willing to come and invest, specifically because the exploration has already happened. The proof of the oil or gas is already in place. So that is the DSF policy under which we are seeing very good results. And under this also there is the coal bed methane window, which is specifically relevant to Madhya Pradesh. So this is basically just telling you that in the nomination regime, acreages were given to ONGC and Oil. And then under the PSC regime, which was brought in the 1980s, we got 28 contracts awarded, most of them to, again, an ONGC and Oil, however, some to private players. Successively now, in the HELP policy in the last few years, we have awarded 85 contracts, 3 DSF rounds of bidding have happened, 144 blocks have been awarded, and 8 open acreage licensing policy blocks have been awarded under the revenue sharing contract regime. Under the open acreage licensing policy, it's a very beautiful kind of a policy in which any prospective investor can look at our digitized database of the Indian exploratory basins, carve out their own requisite block, and give a expression of interest for it, for which they get some incentive when the final bids happen. So I will skip over the old policy and come to the current one. What I would like to point out to you in this slide is that when the deregulation began, new domestic gas pricing guidelines were brought in 2014. The
help policies I just mentioned was brought in, and government invested a lot on hydrocarbon resource assessment study, through which we have a very good idea of the presence of oil and gas in India's sedimentary basins. This was in 2017. Now we are in the process of redoing the hydrocarbon resource assessment so that we can give a much up-to-date picture to potential investors on what lies in the subsurface of the earth in India. We also have easy dispute resolution through arbitration and a committee of external experts, because when we have private players, there are very often differences of opinion on what the government thinks and what the private sector thinks. So it is very, very important to have a good measure of settling those disputes amicably without resorting to lengthy and costly trials in arbitration or in the courts. There have been natural gas marketing reforms, a lot of self-certification of processes, and all these have brought in investor confidence, and now we are speaking to international investors. We already have British Petroleum and Cairn working with us, and I believe oil is also talking to Total Energies for potential technological tie-ups when they go for further exploration in our basins. Now, what favors investment in the Indian exploration and production sector? E&P refers to exploration and production, which is the upstream of the oil and natural gas industry. India has a favorable geology. We have world-class data availability through the National Data Repository, which rests in my office, the Directorate General of Hydrocarbons, and I would invite you all to come and have a look, visit us. And there is a supportive policy regime and very, very low above surface risk. So the risk of natural disasters or the risk of political or man-made disasters is actually, India is a low-risk country in that respect. This is basically talking about favorable geology. Any of you who want to go into this, they can approach me separately and we can have a lengthy discussion. Currently, more than 3 lakh square kilometers is under active exploration. And the aim of the government is to bring this to 5 lakh square kilometers by the end of this year, on which we are on track. Currently, bid round 9 of the open acreage licensing policy has been closed recently. We have got our bids, we are just in the process of evaluating them, and we are in the readiness for launching bid round 10 of the open acreage licensing policy, which shall be India's biggest round of open acreages to be offered. As I just mentioned, under the OALP, there's a freedom to carve out exploratory blocks. There's a play-based exploration with longer exploration duration and larger block areas to incentivize play-based exploration. So what that means in a layperson's term is that if under the subsurface visualization of subsurface geology, there is a play and you have to drill, so you need larger areas to use algorithms to understand where there is a higher potential of oil and natural gas. So therefore you need larger acreages carved out, and that play-based exploration is what government is encouraging. The statutory clearances have been made simple based on single window systems, and these are taken as shared responsibilities. The shared certification process encourages investors to come in with their own certification, to which very few questions are asked. And there's an opportunity to partner with existing players as well as new players. I'm very happy to tell you that for the first time in this bid round 9, which has recently closed, we have national oil companies partnering with private companies in bidding out blocks. Earlier, we used to have private companies, and then we used to have a national oil company to farm in and pick up a part of the equity for exploration. But now they're actively bidding together, which is a very big step forward. We've also introduced key incentives in the current round, where we have increased the block size on offer. We have enhanced the scope for force majeure and excusable delays, and so on. I would not go into details over here because this is something which will require a lot of deliberation. And also for the ease of doing business, I would, as I mentioned, that we have approvals on self-certification basis. What I would like to tell you is that, and draw Anurag sir's attention, is that the portal which he virtually formed, which is the GIS-based Gati Shakti portal, my office, DGH,
is actively using Gati Shakti portal for actively mapping all exploratory activities, all offshore activities. You can actively see in real time every ship, every rig, every floating platform which is in our high seas, and their safety and security is constantly monitored in coordination with the Gati Shakti platform of Government of India. And my office interacts with state governments and the Ministry of Environment and Forests to ease clearances, statutory clearances, and then we are tasked with removing any contractual differences which arise in the course of our interactions with the investors. Now coming to Madhya Pradesh. Madhya Pradesh lies over a transitional area between the Indo-Gangetic Plains in the north and the Deccan Plateau in the south, with a land area of over 3 lakh square kilometers. And then we have identified 3 potential petroliferous basins: Vindhyan, Satpura South, Riva Damodar and Narmada. And unconventional hydrocarbon, which is coal bed methane, has been in production in the state since 2017. As per the hydrocarbon assessment study, which I just mentioned within 2017, we have estimated hydrocarbon resources, the million metric tons of oil equivalent in place, to be more than 555,000, and very less part of this has so far been explored. In Madhya Pradesh so far, the CBM exploration, coal bed methane exploration, which was also there in the mining documentary, has also taken the lead. And 40%, it will come somewhere down in the presentation, 40% of India's CBM production happens in Madhya Pradesh, which is not much, which is actually a very small percentage of our gas requirements of the country, but it is still quite substantial. And in the CBM blocks in Madhya Pradesh are focused in the Shahdol, Sohagpur area. In this map, when whoever can, if you can see the open area, the squares carved over. The pointer doesn't go that far, so never mind. And then we have 6 coal bed methane blocks, of which the first 2 are, the first one, Sohagpur West, is in active production. Sohagpur East is in the process of development. And the other 4 are either in the process of exploration and further development, or they are yet to begin, but they will subsequently start exploration and production in the next few years. But the first 2 are of special interest to us because these are proliferous basins, and Reliance is the company which is doing these in Sohagpur West and potential development in Sohagpur East. And the Sohagpur East is expected to start production from 2025-26. So as soon as next financial year, we should be able to start our production. Before I go on to the actual production over here, these figures I think I can skip. What I would like to mention over here is that new technology which has been used first time in India is being used in Sohagpur. So like you have the coal seams, those of you who have some idea of coal exploration, कोल की परतें होती हैं ज़मीन के अंदर, तह के अंदर, जो कोल सीम जिसको कहते हैं. तो कोल सीम में जब एक्सप्लोरेशन में जाते हैं तो रिलायंस ने स्पेशल टेक्नोलॉजी आयात करी है ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें कि वो कोल सीम में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं. So that is a very technical team which they have imported from Australia. The entire team has come down and is camping in Sohagpur, and they are doing this. They have a window of about 3 meters, which is the coal seam, 3.5 meters, I guess. And they're doing extensive drilling in which they would be going around 4 kilometers horizontally drilling from that depth into the coal seam. And there they will be extracting coal bed methane. And the beauty of this is that after coal bed methane has been extracted, coal bed operations become more safe because the methane has been taken out, so it's safer for to be extracting coal from there. So it does not harm the coal remains. So this is a new technology which all other operators of CBM all across the country are looking at very carefully, because this is going to usher in a new technological revolution in the area of coal bed methane production. So we have very high hopes for increasing coal bed production from Madhya Pradesh in the coming few years.
it contributes to state royalty. Successively, some years there's been high royalty where, and some years because of rains or some technological hiccup in the exploration, the royalty has gone down, but it's a major exploration. Now, I'll just quickly mention about conventional hydrocarbon exploration in Madhya Pradesh. Under the open acreage licensing policy, under 8 rounds, starting from the oldest NELP, which is in the 8th row, we have active acreages. They have been taken up all by ONGC Limited. And now we hope that as we go forward into further OALP rounds, we are hoping to attract more investors because we are offering a lot of data on the subsurface now. What we see is, as I mentioned, that there is a lot of CBM potential in Madhya Pradesh, especially from the Sohagpur region. And this is going into more details of, and then I would also like to say that we have new companies, Transcontinental Exploration Limited and Invenair Petroleum. They have come into Madhya Pradesh, so we have welcomed them into the state. We have identified new resources in Madhya Pradesh. Sir, I would like to urge you over here that Coal India Limited and its subsidiaries also do coal bed methane exploration. And along with the Ministry of Coal, we have an understanding that wherever coal bed methane is possible in the coal bearing seams, their companies can go and do coal bed methane extraction. So for example, I just visited Dhanbad after my Shikharji visit, and I happened to see that there is the BCCL is actively extracting coal bed methane. They have taken some blocks. That is also a possibility which has not yet been explored in Madhya Pradesh. So I think that is something which we can talk to SCCL and and the other subsidiaries of Coal India and urge them to take some coal exploration. The other thing that I'm going to be talking at length in the afternoon, but I would like to mention is that the potential for developing gas-based industries in Madhya Pradesh and also encouraging industry for city gas distribution and how that can take over and bring in a new era of investment in Madhya Pradesh if we are able to leverage the presence of gas in Madhya Pradesh and attract ready investors who can set up gas-based industries. This has been very, very successfully done in some states like Gujarat and in Andhra Pradesh, where a lot of engineering and gas-based ceramic industries, fertilizer, urea plants have all been placed in such a manner that they can use the gas. I just visited Tripura, and India's first clean power plant, which is a gas-based power plant, has been set up in Tripura, which is using the gas which comes out from the Tripura basins. So, and oil is now actively going to Tripura, for which we are going to encourage them. So this is briefly my overview of how hydrocarbon, conventional and unconventional works in Madhya Pradesh. Net, we are at a very nascent stage in the exploration of hydrocarbons. In Damo, Nota, also ONGC is present. Oil has yet to make an opening in Madhya Pradesh, and I would urge them to spend some time now that they are here. And this is a huge potential which the state has, I think, which holds great promise for the future. And once again, thank you for this opportunity. आज आपने मुझे अपने बीच में आने का ये अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ. ये मेरा मध्य प्रदेश मेरा गृह प्रदेश है, और यहाँ पे जब भी मैं वापस आती हूँ मुझे लगता है मैं अपने घर आ गई. तो इस अवसर के लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ. धन्यवाद. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, there is a presentation on unlocking mineral potential in Madhya Pradesh, for which I would like to request Shri Rajiv Mehta, partner Deloitte. National Lead of Metals and Mining Practices of Deloitte, glad to inform that Deloitte is also a knowledge partner in this event. So please put your hands together for Shri Rajiv Mehta. Good morning, ladies and gentlemen over here. Dignitaries on the dais, Shri Anurag Jain ji, Shri Sanjay Shukla ji, Shri Raghavendra Singh ji, Dr. Pallavi Jain, Shri Anurag Chaudhary, and other dignitaries of the dais, delegates. It's a great privilege to be here amongst all of you, and thank you for this opportunity. Deloitte is indeed extremely proud
and excited to be the knowledge partner for this MP Mining Conclave, the first of its kind, and of course, wishing many going forward. So what I want to talk about it over the next 10 to 15 minutes is the mineral potential of Madhya Pradesh as a state. Before that, I'd like to mention about all of us know that India is the only bright spot in the global economy today. I mean, we're seeing a lot of conflicts across geographies. We are seeing countries having hyperinflation. So for example, I was going through some of the data. Some of the countries like Argentina today have annual inflation of 237%. And of course, there are, and in the country, 55% of the population is under poverty. But if you look at the Indian trajectory, India has been, remarkably making progress in global economy, and we soon would become the third largest economy. Today we are a $4 trillion, almost a $4 trillion economy, and various estimates say that India would become close to $10 trillion in the next 7 to 8 years, and 30 trillion is the desire or ambition by 2047. And in terms of areas, clearly I think there are many trends we are seeing. One is of course the entire focus in manufacturing and the focus on energy. So energy transition and focus on energy, increased access to energy is going to be a very important area for Indian I would say industry and as well as the people. Interestingly, India per capita consumption of energy in India is almost 1/10 to 1/12 of US. That means every Indian consumes energy in a year, which a US citizen consumes in a month. Similarly, if I look at the food, if I look at some of the other consumption areas also, India is much behind, so there is a lot of potential. For example, steel, the per capita consumption of steel in India is almost 100 kgs. Global average is close to 230 to 50 kgs. Clearly, I think that those are areas. And the very importantly is the demographics, which is favorable for India. Today, the median age of Indian population is around 29 years. If you look at the Chinese population, the median age is around 40 years, and in Japan is 50 years. That means we will have more people working in the workforce, more spending in discretionary income spending, and thereby more consumption. Interestingly, there was a report which came out a few weeks back, which says the Gen Z population in India today, which is around 25% of India's population. The Gen Z population, the spending today is around 43% of India's spending in terms of the consumption that the people are having. And today this is almost a $1 trillion spending annually, and this is becoming $2 trillion in the next 7 to 8 years. So clearly a lot of spending is happening in India, and with a bipolar and a multipolar world, where we are looking at the China Plus One strategy, more exports, more manufacturing, more offshoring that will going to happen, and more digitization, etc. And if I look at all these areas, clearly there are 5 or 6 key sectors that are going to be the sectors of tomorrow. One is of course energy transition, and energy is going to be a key sector. The second is infrastructure, so much of spending on infra. Third is around manufacturing, and especially around electronics and semiconductor, because India wants to become the 10% of global semiconductor production by 2030, which is almost $110 billion is a desire. And of course, fertilizers, as well as some of the areas like renewable and others. So clearly all these areas require minerals, and thereby, for example, in semiconductor, you will need minerals like copper, you need minerals like lithium, you need minerals like molybdenum. Similarly, in energy, you need minerals like coal, and if you look at the renewables, lithium, cobalt, nickel, etc. So minerals are going to be the foundational layer for the Indian industry as well as economy to grow forward. And if I look at some of the numbers on the bottom left of your screen, the total percentage of consumption of the GDP in Australia, the Australian mining industry contributes 12% of GDP. If you look at the US as well as China, almost $484 billion of GDP consumption. So clearly, I think the Indian mining industry has a lot more role to play going forward in the Viksit Bharat journey by 2047, and thereby MP has a role to play. So I'll just come to the MP story, why we're saying MP has a role to play. So MP is the fastest growing state in terms of revenue
for mineral, production in the country. The contribution of mining sector in MP to the GDP is around 2.67%. India is around 2%, so it's clearly higher. But very interestingly, if I look at some of the minerals, I think the previous speaker spoke about minerals like copper, minerals like manganese, minerals like rock phosphate, MP and coal. MP figures in the top 1 or 2 or 3 ranks in the country. And if I look at on the right hand side, the chart, if you see the revenue of mineral states, Odisha is of course, we are looking at Odisha to kind of catch them pretty soon. But MP is probably going to be the second largest state for mineral revenue in the next 2 to 3 years. That's the ambition that we have. And with so many minerals, so many reporting mines, 263 operating mines at MP, the largest number of blocks under exploration, the highest in India, which is 64. 78 blocks were auctioned, which is the highest in India again. I think this dream is very much possible going forward. Now let's paint the picture of how we should achieve this dream, and especially some of the minerals that are going to be important. So if you look at the chart here, so this is the MP state, and I would say this is Ratna Garbha in terms of minerals, so many minerals there, and very high-end minerals, critical minerals. But also on the right-hand side, if you see some of the data points, it says that copper, MP has 9.87% of reserves to resource ratio in India versus MP is 31%. Clearly we are outperforming, but we have way to go. Coal, manganese, rock phosphate, graphite, etc. Rock phosphate, why it's important going forward? Because there's a lot of focus on fertilizers and there's a lot of imports happening of potash and others. So clearly the Indian government is looking at reducing imports, thereby promoting, operationalization of mining and rock phosphate in India, and phosphorite, which MP has a lot of minerals in the state. Again, the graphite is another mineral which is upcoming in the state. If you look at the overall share of India's resources is around 6.22%. Of course, this number will grow up because there are many states, I will talk about many districts in MP which have a lot of graphite. But today the production and as well as the reserve to resource ratio is around almost 0. So we need to look at that. So these are the minerals of potential, and there are many more. We have just, the minor minerals are there, but we have just focused on some of the major minerals. And in terms of industries, clearly coal is, today we are the powerhouse in the coal production. 8% of India's coal reserves and 16% of India's coal production happens in MP. And in districts like Singrauli, Shahdol, Umaria, Betul and various others. There are of course opportunities. The government generated almost 4,000 crore for coal in FY24 in terms of revenue. And with auction mines soon to produce 25 million tons per annum, 6.8 million tons of expansion of blocks in the progress, this number will grow up significantly. But the more important thing is, beyond the conventional use of coal in power, we are seeing a lot more traction in the non-regulated as well as the upcoming areas like coal-based methane is something people are looking at. Underground coal gasification is something that we should look at. Gasification as a whole, there's a lot of focus. The government has also come out with a viability gap funding. There are incentives in the auction blocks for gasification. So clearly we're seeing that those things happening going forward. In terms of critical minerals, looking at rock phosphate and graphite. Rock phosphate, we have a lot of rock phosphate in districts like Jhabua, Chhatarpur, Sagar, etc. And there are 6 blocks which have been auctioned recently, which is the highest, one of the blocks with the highest FPO, which is 320%. And downstream industry, the fertilizers, water treatment, food and cosmetics, all these are relevant. And with India's significant amount of reserves in rock phosphate, 29%, and second in production, clearly this is a focus area for us. But I would more focus on graphite because we tracked the entire auctions in the last 3 or 4 tranches. The maximum number of bidding, the maximum number of successful auction that happened in the critical mineral auction was graphite. Because if you look at all the minerals, be it lithium, be it cobalt, nickel, based on the battery chemistry, some of these minerals may go. Like manganese, it can be replacing a lot of cobalt, because cobalt, the supply chain is very difficult. It's in Congo, it's in China, the processing happens in China.
But manganese and graphite and copper, these are minerals which are going to continue in the battery value chain going forward in the n number of years we are looking at. And all these minerals are predominantly available in Madhya Pradesh. So districts like, if you look at Betul, Jhabua, Siddhi, Alirajpur, these have all good quality of graphite. So there is a lot of potential in graphite as well in the state of MP. I'll not talk about much about copper. Everybody is aware about copper. The largest, I would say, the operating mine is in Balanchkhand, which Hindustan Copper is doing. In fact, we are very proud to say we are working with the government of India for the copper vision for the country. And we have been very intricately associated with all the copper producers to understand how copper, and for them, Madhya Pradesh is going to be a key cornerstone state as a focus area because so much of potential. But if I shift my attention to bauxite, clearly there is a lot of bauxite auction that happened. But this is clearly, I think, one mineral where we can focus more because today the rank in terms of production is pretty less compared to the country. There is a potential here. And last is, of course, from critical minerals, manganese and limestone. Manganese, we are the first in the country in terms of production, and there's a lot of exploration happening. And manganese is becoming pretty important because in many of the battery chemistry, they're replacing cobalt going forward. So that is one clear area. Limestone is, of course, the underlying industry like cement, construction, glass making are going to grow in the state. So these are going to be important as minerals. But more than the minerals, I think we also should look at the ancillary industries that will benefit if the mining in the state grows. So first is mining equipment manufacturing. The Indian market for mining equipment manufacturing in India is expected to grow to by almost 8.5 billion by 2030, which is a CAGR of 6.4%. Like drilling machines, crusher, conveyors, some of the supporting equipments, those are going to grow. So there's a lot of demand there. The other is logistics and transportation. That is entire trucks, railways, ICDs, and some of these dumpers, tippers. Though their requirements will grow, and the smart mining, also digitization. So all these areas are going to be important, maybe a focus area for the state. But also some of the other industries like chemical industries, construction, infrastructure, safety and equipment and services. All of these industries can have a ripple effect through development of the mining sector within the state. Last is why Madhya Pradesh, and what are the kind of parameters. So Indian government actually, I would say, introduced a concept called ranking of states, where they're going to rank various states in terms of the ease of doing mining, like ease of doing business. And if you look at some of the parameters in the ease of doing mining, I would say framework. So one is, of course, looking at exploration, looking at mining, looking at government support, looking at logistics facility, skilled manpower, technological investment. All of these, if you look at MP, we are the state with the maximum number of exploration. Government support, Mr. Singh spoke about the 40% capital subsidy on plant and machinery. There's a lot of handholding. The state government is very clear that we need to handle the leaseholders, we need to handle some of the downstream value addition players to getting the clearance, getting some of the investments in place. The logistics, the manpower, all these areas, clearly the state is outperforming many other states, barring one or two handful, especially like Odisha in the mining and maybe one or two more in the other areas. So this is a state which has excellent potential going forward. And in terms of how do we leverage the resources to become self-reliant, so we looked at some of them, like exploration. How do we have more exploration, especially like minerals like graphite? Minor minerals is going to be a key area because beyond critical minerals and beyond some of the major minerals, the minor minerals will have a lot of traction, lot of demand going forward, like pyrophyllite, like dolomite, like marble. For example, in the steel industry, there's a lot of dolomite requirement that is there. And incidentally, we are working with one of the Middle East countries recently. So they are looking at exporting dolomite to India. But if you have dolomite in India, why not mine here and produce here? So that's going to be important. Logistics and financing, of course, financing would be for not only the industries but also the processing hubs.
So the concept that is there across the world, and of course it is developing in India, is that all these critical minerals, if they're mined in a place, the processing needs to happen in proximity. Otherwise, there's a lot of movement of minerals. So processing is going to be important, and thereby financing and technology and digitization. How do we digitize the entire mining ecosystem within the state? How do I digitize all the minerals? The land banks are going to be important for this state to prosper and become probably the #1 state in India from a mining point of view. Thank you so much for listening to me, and privileged to be here. Thank you so much, sir. Now, for one more presentation on a very important topic, which is smart technologies for mine safety and fleet management. May I request Sri Vikram KY, Director, CMT, GSC Technology Research Park, Indian Institute of Technology, Hyderabad, to please come forward. Very good morning to the dignitaries on the dais, allied personalities who are there here, scientists, and who are working alliedly for the mineral industry in the India to uplift. So myself, Mr. Vikram KY, I'm a director, CMT, Critical Mineral Trackers, Geo Solution Center. Today I'm going to address a topic on mining safety, current smart technologies for a better mining safety and fleet management system using artificial intelligence. The point of taking this particular topic is value for life and asset. So it's a very important thing when we are talking about a starting stage is mineral exploration and ending stage is our mining auction and going for the mining. So when we are going for the mining, the SOP designs should be in such a way the things should not go wrong. In this regard, we have taken this topic. So when it comes to the critical mineral trackers, so we have started our journey with IIT Hyderabad, establishing ourselves in Technology Research Park for bringing data mining in using artificial intelligence in mineral exploration. We have developed a few enough models and we are running that models on a pilot project of 2 states currently. So along with this, we have taken up this topic and we have worked with few professors of IIT and along with the CK Birla team, because we need a support of very high-end servers across the world of 192 statistical data. So in that regard, we have taken the support of CK Birla, that is GTS, and we have developed this, we have come up with this technology. Now coming to the second slide. So importance of mining safety. Mine safety is very crucial nowadays, because now in the next slide I'm going to show the statistics. What is the current mine safety which is going across for the values and asset. So now with the DGMS is responsible for the implementation of enforcement of the Mine Act 1952. The current technologies which we are using is IoT and smart sensors, drone technology, vehicle tracking system, and proximity warning systems, and ventilation, monitoring and control, geotechnical monitoring, slope stability, radar. So simulators, training and skill development, revenue and emergency systems, biometric systems, and for working and monitoring. The next slide, which I'm going to present, is the statistical data. So where the fatal accidents in coal mines and serious accidents in coal mine and yearly cause-wise fatal accidents. So this is the statistical data which is showing in the current system as per the data of the government. So in the next slide, we are going to concentrate immediate impacts, what exactly is happening, and economic impacts, environmental consequences, psychological impacts, and regulatory and compliance issues. Now, this is the mine safety using digitization, advantages, real-time hazard detection, predictive maintenance, enhanced training and simulations, autonomous equipment, improved decision-making, and monitoring compliance with safety regulations, emergency response, optimization, cost reduction. So this is the digitization when it comes to the mine safety by using the latest technology, by using artificial intelligence. So
The next slide would be our mine safety system, how exactly it works. Like a digital solution, so 360 degrees collision audience system. Now I'll show this particular technology in the video form. Actually, this particular technology is the safety of the trucks, human accidents in the mine, and especially for the 360 degrees collision avoidance system. Now coming to next, slope stability radar. So I can present one more video. नहीं आप बताइए, आप वीडियो बताइए। नहीं वो थोड़ा उस तरफ जा रहा है वीडियो। Because this is mainly used in Australia and America. So for bringing this particular technology to a cost-effective technology for Indian conditions, we are working out with the OEM purchase like this RFID sensor. So the main purpose of this RFID sensor is, so when a person carries as a tag like this, when he goes into the mine, this works for 16 hours with a battery. And the sensor detection, whatever is there in the mine, so that will work for 5 years battery life continuously. So once anything is happened, like the sensor technology is such advanced technology, if anybody has got some suffocation effect or any issue happened in the mine, they can press this one particular button, and then finally the command control will buzz, and immediately a rescue team can take care of the person or a machinery or the mine, so to not to go in a bad shape. So in this regard, so this particular device and this particular card, we are bringing into very cost effective for Indian conditions. This will work out in another 3 months to 6 months. But this technology is
very effective when it comes to the mine safety, and if this particular thing is brought into the limelight. So why 360 degrees CAS is required? So in this regard, I would like to explain, because we have mapped this area, sir, with a RFD card, this area with a Hyderabad server and in turn with US server. I want to show a live demonstration right now. So I would like to call Mr. Karthik, who is the technology head of our GTS collaboration. Thank you. Due to the paucity of time, I'll just run through this. So it would be a privilege for me to address this forum of dignitaries. Rather to promote the product, I would just let this forum know about the evolving technologies in ensuring the mining safety. Yeah. I'll close this, sir. Yes. Yeah. Can you just... So for the safety of human life and for the assets, we have actually will tag it on a geo layer, and then with this RFID device, both the life of the persons who is working under the mine and the asset will be clearly monitored, and the visual command center can take proactive action if there is a risk encountered. So with this, I close this session, and thanks for the opportunity for me to present this before you. Thank you. Thank you, sir. Thank you on behalf of CMT GSC, IIT Hyderabad. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And now it's time to invite our special guest of today's program, our chief guest, for whose address we all were waiting. With a huge round of applause, please welcome Shri Anurag Jain, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. It is my privilege to welcome all of you in our beautiful state, Madhya Pradesh. ये मुझे चीफ सेक्रेटरी का चार्ज लिए अभी मात्र 15 दिन भी नहीं हुए हैं, बट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस स्टेट, मेरा अपना राज्य है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को आज इस हॉल में देख के। मैं आप सब लोगों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आज का पुनीत दिवस है। इस खूबसूरत हॉल में जहां आप बैठे हैं, ये 100 साल से पुराना हॉल है और इसके बहुत उपयोग चेंज हुए। मुझे याद है कि पहले जब ये विधानसभा होती थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद 2007-8 में इसके रेस्टोरेशन का डिसीज़न लिया, और जब इसको रेस्टोर किया गया तो हमें विश्वास नहीं हुआ। पहले जब विधानसभा बन गई थी 100 साल के ऊपर, करते करते अलग अलग समय में ये पूरा केवल वाइट पेंट दिखता था, चूना पोता जा चुका था इसके ऊपर कम से कम 10 इंच, और ये करीब पिछले 12-15 साल पुरानी बात है कि उसका पूरा रेस्टोरेशन किया गया, और ये ओरिजिनल आर्ट वर्क आज से जो 110-115 साल पहले किया गया है, वो खूबसूरत चीज़ आपके सामने है। एनीवे, ये तो रेफरेंस में कि आप कहाँ बैठे हैं और आज की बात, बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माय कोलीग्स राघवेंद्र जी, संजय शुक्ला जी, अनुराग चौधरी जी, CII के वैश्य साहब और डेलॉयट के राजीव जी, NMCL के CMD साहब, कि आप सब लोग के सहयोग से पहली बार इस प्रदेश में वी आर होल्डिंग ए सेपरेट माइनिंग कॉन्क्लेव। वी हैव बीन होल्डिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिंस 2007. We have been holding it for every 2 years since 2007. But a separate focus on mining is being done for the first time. You would have seen in the exhibition, you would have seen all kinds of the mineral wealth which is available in Madhya Pradesh. You would have seen the kind of, various companies which are there,
but the most important point which must have come out clearly in the presentations which have been made till now, number one, that Madhya Pradesh is one of the leading states in the country for mineral resources. 3-4 आइटम में हम लोग नंबर 1 हैं. डायमंड में वी आर द सोल प्रोड्यूसर इन द कंट्री. हम बात करें कॉपर की, मैग्नीज की, वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री. उसके बाद रॉक फॉस्फेट, कोलबेड मिथेन में हम लोग नंबर 1 हैं. रॉक फॉस्फेट और जो कोयले में हम लोग टॉप 3-4 में आते हैं. इसको यदि हम ये देखें, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इंडस्ट्री लगाता है, इसके साथ साथ हमारा जो एक्सप्लोर्ड रिजर्व है वो भी देखने लायक है. कोयला जो है 200 साल तक के लिए काफ़ी है. कोलबेड मिथेन की मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन देख रहा था अभी यहाँ बैठे, जो अभी एक्सप्लोर हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा है, उस हिसाब से देखें तो 500 साल में यहाँ का रिजर्व ख़त्म नहीं होगा. सो यू हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू कम एंड रिमेन इन्वेस्टेड. किसी भी कंपनी की लाइफ में 25-50 साल काफ़ी होते हैं एक प्रोजेक्ट को लगा के अपना प्रॉफिट निकालने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, तब तक हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी चेंज हो जाएंगी कि विल हैव न्यू थिंग्स विच विल कम इन. जैसे कोयले की जब बात चलती है तो वी नो द वर्ल्ड ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम कोल. In India also we have taken up a goal of net zero by 2070. और एक मोटी बात है कि अगले 50 साल के बाद कोयले बेस्ड इंडस्ट्री शायद ख़त्म होगी. अभी हमारे पास 150-200 साल का रिजर्व है. तो वी नीड टू मूव अप क्विकली एंड एंश्योर कि जब हम लोग इनके रेस्ट्रिक्शंस पे आएँ उसके पहले जो हमारी एक नेचुरल वेल्थ है उसको प्रॉपरली यूज़ कर लें. दूसरी हमारी को मुझे लगता है आपको बहुत क्लियरली बात सामने आई होगी कि पिछले दिनों जब से एक ट्रांसपेरेंट रिजिम की बात हुई, आई मीन पल्लवी जी के सिस्टम में प्रेजेंटेशन में भी बात आई एंड ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द सेक्टर. पहले अलग अलग तरीके से माइन ऑक्शंस, माइन अलॉटमेंट्स होते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए और नेचुरल रिसोर्सेज के ऑक्शन की बात हुई एंड देन इट टुक सम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उसके बाद एक पूरी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजीम को हम लोगों ने वी पुट इन प्लेस. और ऑक्शंस अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुए हैं और लगातार पिछले कुछ सालों तक नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑक्शन में मध्य प्रदेश हैज़ बीन नंबर 1. तो यदि सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हमारे यहाँ ऑक्शन हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब अगले कुछ सालों में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है. आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स, बट आई एम कॉन्फिडेंट गिवन द फैक्ट दैट वी हैव auctioned the maximum number of blocks and now we are moving forward quickly to support our winners of the auction so that they start their production soon. In next 3 to 4 years I expect Madhya Pradesh to move up in the top 3 states as far as mining production is concerned. तीसरी बात, NMET का जो अभी एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ब्लॉक्स हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है. सो दीज फैक्टर्स आर सफिशिएंट टू आउटलाइन दैट मध्य प्रदेश इज द प्लेस टू बी इन्वेस्टेड इन इफ यू आर इन द माइनिंग सेक्टर. दूसरी चीज़ किसी भी बिजनेस के लिए होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. टिल वेरी रिसेंटली, जस्ट अबाउट टिल 2 years back, I was Secretary Industries, Government of India also. That time we had done a lot of work on ease of doing business and reduction of compliance burden. And then we actually created another index and we were working along with the industry to reduce the cost of compliance in the country. And Government of India is actively working. I'm very happy to share that Madhya Pradesh has consistently been ranked in top performing states as far as EODB is concerned. जब EODB की रैंक पहली बार रैंकिंग हुई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज 2016, 5 स्टेट्स ज्वाइंट टॉप किए थे, सबको 100 on 100 मिले थे. मध्य प्रदेश वाज वन ऑफ देम. उसके बाद से हर साल हम लोग फ्रेमवर्क चेंज करते चले गए, जिससे कि इफ सम पीपल हैव अचीव्ड अ सर्टेन बेंचमार्क वी शुड एस्पायर टू गो फर्दर, बिकम बेटर. और हर बार जो नए बेंचमार्क थे, मध्य प्रदेश कंटिन्यूसली रिमेन इन द टॉप 5
और जो लास्ट रैंकिंग निकली 2024 में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ 2023, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, मध्य प्रदेश वॉज द 4th बेस्ट स्टेट. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, these are the top states. In the EODB, I'm sure all of you would be aware, because you are from the industry sector, that Government of India has come out with a single window system, which is a very beautiful system. आप लोग में से किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला सिंगल विंडो सिस्टम यूज़ किया है? हैज़ एनीबडी यूज पर्सनली? कि आपके सबऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लगाने के लिए? आई डोंट नो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी इट पर्सनली. इट्स AI बेस्ड सिस्टम. You just tell what you want to do, where you want to do, what business do you want to do. It will start throwing questions to you. After that, about maybe 25 odd questions would be asked to you, and the system will understand कि आपको क्या क्या clearances चाहिए, कहाँ से चाहिए. It will throw out the number of clearances you require from which department, state, government of India, and it will generate just one form uniquely designed for you. उस एक फॉर्म में आप अपनी जो उसमें जानकारी है भर देंगे, तो सिस्टम विल कन्वर्ट इट टू द एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑल दोज लाइन डिपार्टमेंट्स कि उनको क्या चाहिए. उन डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन पीछे से चली जाएगी, और देन यू कैन ट्रैक कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हो रहा है. हम लोग स्टेट्स के साथ बात करते थे कि इन्हें टाइम बाउंड डिस्पोजल करें. दैट विल बी द नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी राघवेंद्र का प्रेजेंटेशन कि आपने डीम्ड परमिशन का भी प्रावधान कर दिया है. सो सम जो डीम्ड परमिशंस हो रहे हैं, तो मीन्स ऑल दीज क्लियरेंसेज आर हैपनिंग इन टाइम. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू एनी इंडस्ट्री कि मेरे को अपनी क्लियरेंसेज एक टाइम बाउंड मैनर में मिले. दूसरे कुछ जो इश्यूज सामने वैसे राघवेंद्र के प्रेजेंटेशन में आए थे कि नो मैन डेज लॉस्ट. मध्य प्रदेश इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट. ये जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये अब रिकॉर्ड 25 साल का हो गया होगा. जब व्हेन आई वाज हियर हम लोग जाते थे इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव में, तो हम लोग कहते थे पिछले 15 साल में, पिछले 10 साल में हमारा कोई मैन डे लॉस नहीं हुआ. उसके बाद से मैं करीब 10 साल भारत सरकार में लगा के वापस आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है 25 साल हो चुका है. 25 साल तक किसी स्टेट में कोई मैन डे लॉस ना हो लेबर रिलेशंस की वजह से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ी हेडलाइन. ऐसा क्यों है, सोचा आपने? कैन एनीबडी थिंक? मध्य प्रदेश के लोग एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं. बाकी राज्यों में आप जाइए, इफ़ यू रिकॉल 1956 जब स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, इट वाज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और सर्टेन थिंग्स वर देयर, बट वॉट एवर वॉज लेफ्ट आउट इन बिटवीन, मध्य भारत, महाकौशल, विदर्भ, सिरोंज, ग्वालियर, जो बीच में बच गया उन सबको इकट्ठा करके मध्य प्रदेश कर दिया. तो पहले से ही जब मध्य प्रदेश का फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब बना, तो इट वाज लाइक ए कॉस्मोपॉलिटन स्टेट कि हर आदमी हमारा है. वो कोई इस प्रकार की अंदर बाहर की बात नहीं थी. ये जितने लोग बाहर से आके बसे हैं मध्य प्रदेश में, शुरुआत में फॉर सर्टेन रीजंस मध्य प्रदेश से इवन सिविल सर्विसेज में ऑफिसर्स का सिलेक्शन बहुत कम होता था. वन थिंग आई कैन टेल यू इनसाइड स्टोरी कि दिस इज़ प्रोबेबली द ओनली कार्डर जहाँ ये पूछता भी नहीं है कि कौन इनसाइडर है कौन आउटसाइडर है. अदरवाइज बाकी सारे कार्डर्स में बात होती है कि ये आदमी इनसाइडर है तो इसको ये वाली पोस्टिंग दो, ये आदमी आउटसाइडर है तो इसको ये वाली पोस्टिंग मत दो. मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ इनसाइडर्स वॉज वेरी लिमिटेड. एंड जैसे मुझे ध्यान है, एक हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि जिस प्रकार से शक्कर में चीनी मिल जाती है, वैसी इस प्रदेश की तासीर है. बाहर के लोग आके यहीं बस जाते, कोई बाहर मध्य प्रदेश आने के बाद बाहर नहीं जाना चाहता. इसके अलावा अबाउट यू थिंक ऑफ वाटर, वी आर ए वाटर सरप्लस स्टेट इन द सेंस कि वी हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड सफिशिएंट वाटर फॉर इंडस्ट्री. लाइन से पूरी नर्मदा नदी, आई डोंट नो आप लोगों को इसको स्टोरी पता है कि नहीं. नर्मदा इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पायस रिवर इन द कंट्री. हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यमुना जी में 7 बार नहा लो तो आपको पुण्य पाप धुल जाते. गंगा जी में 1 बार नहा लो तो पाप धुल जाते.
नर्मदा जी के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा नदी पर पूरी एक सीरीज ऑफ डैम्स बन चुकी है और जो थोड़े बहुत जगह बची हैं, बिल्कुल शुरुआत में अमरकंटक के किनारे वहाँ पे भी डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो वी हैव सफिशिएंट वाटर। दिस इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, आई डोंट नो वेदर इट होल्ड्स ट्रू फॉर नाउ और नॉट, आज से 25 साल पहले की रिसर्च है। गंगा जैसे इट कम्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स, तो देयर इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वाटर से समर फ्लो। तो समर फ्लो इज 6% ऑफ द मैक्सिमम वाटर विच गंगा रन्स थ्रू, पीक से मिनिमम फ्लो का। बट इन केस ऑफ नर्मदा जी इट इज 12%. वाई? In spite of not having any glaciers. That is because of the rich forest we have it. नर्मदा जहाँ से निकलती है उसके आसपास इतना रिच फॉरेस्ट है कि कंटिन्यूसली ज़िंदगी भर उसमें पूरे साल भर पानी रिस रिस के आता रहता है। तो वो रेशियो जो है वो गंगा जी से भी ज़्यादा है। तो अब सफिशेंट पानी हमारे पास है। फॉर्चुनेटली वी आर ब्लेस्ड विद द सोलर एनर्जी ऑल्सो। तो सोलर एनर्जी में हाईएस्ट इंटेंसिटी राजस्थान और गुजरात में है। उसके बाद द नेक्स्ट हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द सोलर एनर्जी इज़ इन मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर इट्स इनोवेशन। मुझे ध्यान है कि मध्य प्रदेश में जब रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट बोलते हैं ना, उस समय आई वॉज इन दिल्ली, अल्ट्रा मेगा सोलर अल्ट्रा, एवरीवन वाज सो सरप्राइज्ड इन दिल्ली कि हाउ कैन इट बी। पूरी दुनिया में कहीं बिड करा लो तो 3 रुपए की बिजली आती थी, रीवा वॉज बिड फॉर 1.97। रीज़न वॉज द वे द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड। उसको प्रॉपर करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसका रिस्क को कम कर दिया गया। अभी वी आर टेकिंग ए वेरी ह्यूज ड्राइव, ह्यूज कैंपेन इन द स्टेट कि हमारे जितने एग्रीकल्चर फीडर्स हैं उन सब के पास डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन हो, तो हम अपने किसानों को दिन के टाइम बिजली दे पाएँ। मुख्यमंत्री जी ने जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था तो जो प्रायोरिटीज़ बताई थी, तो कल ही वी हैड ए वेरी गुड मीटिंग विद द बैंकर्स, एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब मिलके एक कैंपेन शुरू करेंगे। एक दूसरा इनोवेटिव काम किया जा रहा है कि हम लोगों ने अपनी मैपिंग की उत्तर प्रदेश के साथ, और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनको एक कॉमन प्रोजेक्ट बनाने की बात की। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग सफिशिएंट एनर्जी जो है अभी, बट लुकिंग इनटू द फ्यूचर वी आर मूविंग कंटिन्यूसली इन दैट डायरेक्शन दैट वी विल कंटिन्यू टू रिमेन द एनर्जी सरप्लस स्टेट। मुझे ध्यान है हमारे देश में सबसे पहला जो 24/7 बिजली देने वाला राज्य बना था वो गुजरात था, और गुजरात के बाद दूसरा राज्य जो बना जहाँ 24/7 बिजली थी वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में लगभग सभी चीज़ों में पीपल आर इनोवेटिव। एक और चीज़ जो देश के स्तर पर लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओपन ब्यूरोक्रेसी जो अवेलेबल होती है आपकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए, कंपेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ सीनियर ऑफिसर से मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पे कलेक्टर तो गांव-गांव में दिख जाते हैं घूमते हुए, जो कि दूसरे राज्यों में शायद उतना नहीं दिखते। तो इट इज़ मोर इजीली अप्रोचेबल। इन्हीं सब चीज़ को एक और इनोवेटिव चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिससे आपको रिफ्लेक्शन होगा कि मध्य प्रदेश में जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसकी सोच क्या है। आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। मध्य प्रदेश दिस वाज द ओरिजिनल थॉट जो मध्य प्रदेश की लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर रखी थी दुनिया के सामने, और आज ये लगभग सभी राज्यों ने इसको कॉपी किया है। क्योंकि हम अपने जो आम नागरिक है उसकी जो तकलीफ़ है, जो हमारे पास किसी काम के लिए आता है, उसको एक कानून के तहत गारंटी देके एक समय सीमा में पूर्ण करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूँगा कि ये जो 2 दिन की सेमिनार में आप आए हैं, प्लीज़ सी फॉर योर सेल्फ, इंटरेक्ट विद आवर पीपल, आपस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसको समझें। जो बात हो रही है, जब हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, एज सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आई यूज्ड टू लीड डेलीगेशंस टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, डावोस एटसेट्रा। वहाँ जाके हमारी एक बेसिक पिच थी, और दुनिया मानती है इस बात को कि इंडिया इज़ द ब्राइट स्टार
ओनली होप अगले कुछ सालों में। और ये जो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, ये शुद्ध रूप से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास। आई वाज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टीम जो ये डिज़ाइन कर रहे थे हम लोग। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो विज़न बनाया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर का विज़न बनाया गया, दोनों का आई वाज कोर ग्रुप मेंबर, क्योंकि पहले मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था, बाद में रोड सेक्रेटरी था। इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड एनालिसिस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, और कंटिन्यूसली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम 7 से 8% पे ग्रो करते रहेंगे अगले 25 साल तक। जो सारे पैरामीटर्स हैं हमारे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको देखते हुए पॉलिसीज़ जो जिस प्रकार से अभी रखी गई हैं, 4% इन्फ्लेशन लिया, 1% डेप्रिसिएशन ऑफ विज़ावी डॉलर हुआ, तो इन डॉलर टर्म्स $30 ट्रिलियन, एक्चुअल में $32-33 ट्रिलियन के करीब फिगर आती है, विच इज़ अ रियलिस्टिक असेसमेंट। तो इसलिए $30 का वो रखा। अब $30 ट्रिलियन के हिसाब से आप पर कैपिटा इनकम और ये सब लगा लीजिए, तो एक बहुत बड़ा आपका मार्केट इंडिया के अंदर है। एक्सपोर्ट तो है ही, पर इंडिया के अंदर भी है, और मध्य प्रदेश उसके सेंटर में लोकेटेड है। सेंटर में लोकेटेड है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी पूरे इंडिया में माल बेचने में मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड होगी इफ़ यू आर सिचुएटेड हियर। तो यहाँ के मिनरल्स को यूज़ कीजिए, यहाँ के माइनिंग में आइए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यहीं की यहीं लगाइए। आई एम श्योर कि यू वुड नॉट लाइक टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। इस समय लोग ये बातें कि यू विल बी ए लूज़र इफ़ यू डोंट वांट, यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। मैं कहूँगा यू विल बी ए लूज़र इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी एंड मध्य प्रदेश ग्रोथ स्टोरी। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके शब्द हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। और सर ने नर्मदा नदी का भी जिक्र किया, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सारी नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं और नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में यानी पश्चिम दिशा में बहती है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और नाउ फॉर द वोट ऑफ थैंक्स आई वुड लाइक टू कॉल श्री आशीष वैश्य सर, चेयरमैन CII मध्य प्रदेश एंड चेयरमैन श्री गिरिराज स्टील्स। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री आशीष वैद्य जी। Respected Shri Anurag Jain sir. Sir, as an industrial body, we are always listening about the growth of India, mainly through industry, road and Gati Shakti. So now all three are within our state. So it's a proud moment for all of us to have all the three growth engines of Madhya Pradesh steering the growth of Madhya Pradesh. Welcome back to home state. Welcome, Dr. Pallavi Jain Govil, ma'am. You are also part of Madhya Pradesh. We have got a very robust bureaucratic system which has created a wonderful EODB in Madhya Pradesh, which has become a jealous point for all the states. And the person steering this system, Sanjay Shukla Sahab, Raghavendra Singh ji, welcome sir. Deloitte, it's always delight to listen to Deloitte. So welcome Deloitte. Anurag Chaudhary ji, welcome. Welcome Indev ji, it's a pleasure to be with all of you. Sir, as a chairman Confederation of Indian Industries CII, I can tell you that whenever we are going to other states, people are anxious and curious listening about Madhya Pradesh. They are anxious because we are eating their business. We are diverting their investment. Recently, I have got a chance to visit Kolkata and Gujarat, and most of them are saying you are redefining policy at every moment, how we are going to cope up with your speed. Previously, you used to have one investment summit in 2 years. Now you are having 6, 7, 8 investor summits in 1 year, and all are hugely successful. So, sir, I personally believe that as an industrialist of Madhya Pradesh, it's a proud moment for all of us to be in Madhya Pradesh and from Madhya Pradesh. So a give round of applause for the government officials of Madhya Pradesh and the leadership of Madhya Pradesh. So the only thing we used to... Sir, I'll come for them also. Sir, normally whenever we are thinking about the industry, the only thing we used to feel is that we are somewhere lacking in mining sector. We were very good in agriculture, not very good, we were the best in agriculture. We were very good in industry.
The only thing we were lacking in mining. So I think today we have filled that void. And sir, like you, I am also from Gwalior. My hometown is from Gwalior. तो सर मेरे बुजुर्ग लोग एक बात कहते थे कि खजाना तभी मिलेगा जब जमीन खोदेंगे. तो आज अगर हम माइनिंग की बात करते हैं तो हम आज जमीन खोद के प्रदेश के लिए खजाना निकाल रहे हैं. और ये आज का दिन सर ये एक माइलस्टोन है हमारे मध्य प्रदेश की ग्रोथ में, क्योंकि माइनिंग जो हमें ग्रोथ देने वाली है, वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रिच स्टेट, हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए. और बहुत सारी चीज़ें सर आई ओपनर आज मेरे लिए भी रही. जब मैं वहाँ पे गया एग्जीबिशन में आपके साथ ही, तो जिस पत्थर को मैं राजस्थान का समझ के खरीद के लाता था, पता लगा वो मंडला से निकलता है. मेरी फाउंड्रीज हैं सर, मैं मैग्नीज और सिलिको मैग्नीज लाता हूँ, एंड आई यूज टू बिलीव देम कि वो छत्तीसगढ़ से आ रहा है, बट आई केम टू नो कि हम ये सब मध्य प्रदेश से ले रहे हैं. सो इट्स अ बिग आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस सर, एंड वी सिंसियरली थैंक टू यू. सर मेरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, they are part and parcel of growth engine of Madhya Pradesh. And as you rightly said sir, कि मध्य प्रदेश एक समावेशी राज्य है. यहाँ पे आके कोई अपना कोई पराया नहीं रहता. My family also came from Rajasthan, but we proudly say कि we are from मध्य प्रदेश. और हम राजस्थान वालों को कहते हैं कि हम आए, हमने ग्रो किया, आप भी आइए, आप भी ग्रो करेंगे. तो जो मध्य प्रदेश में नहीं है सर, उसको एक ही बात कहूँगा कि अगर भविष्य बनाना है, पैसा कमाना है और आत्मसंतुष्टि चाहिए तो मध्य प्रदेश में आइए. माय सिंसियर थैंक्स टू ऑल द मीडिया पर्सन्स, टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, एवरीबडी. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड सर ऑन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री आई एश्योर यू कि हम दो पैरेलल्स नहीं चलेंगे सर, ट्रैक की तरह. गति शक्ति में सर आप पैरेलल चला रहे हैं, हम सर आपके ही इंजन में बैठ के साथ में चलेंगे. थैंक यू सर. Thank you so much, Ashish ji. Now, we will be moving for our technical session. So, for that, the first technical presentation for that, I would like to call Shri Arun PV, Computer Science Engineering Group, IIT. So, there's a change. यहाँ पर हम एक टी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. वी आर स्टॉपिंग हियर फॉर अ टी ब्रेक, सो एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज टेक टी. थैंक यू सो मच. एंड आफ्टर दैट वी विल मीट हियर ओनली फॉर द टेक्निकल प्रेजेंटेशंस.
I request each and everybody of you to please come inside the Raja Bhoj Hall as the technical presentations are about to begin. मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया आप जल्द से जल्द पुनः राजा भोज हॉल में एकत्रित हों। हम तकनीकी सेशंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ कि आप कृपया जल्द से जल्द सभागार में उपस्थित हों। टेक्निकल प्रेजेंटेशंस की शुरुआत हो रही है। हेलो चेक। हेलो चेक। I request everybody to please be settled down. Now, for the first technical presentation, I would like to call Sri Arun PV, Computer Science Engineering Group, IIIT Tirupati, and he is going to deliver his presentation on digitization and mining technology, artificial intelligence, and machine learning. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Sri Arun PV. Check one, check, check, check. Namaskar to one and all. So, before starting, I'll not bore you more than 10 minutes, so I'll quickly finish the session. So it's actually a privilege and an opportunity to be here. I was hearing from the August gathering and the various discussions, so it's a highly informative session. It's a learning process for me as well. So thanks to all our collaborators that we could do some work in this domain. So I'll be just briefing about the digitizing mining technology from an AML perspective. I'm a faculty with the computer science group. So we know that, in mining or when you talk about the mining, there are different aspects of digitizing the mining. So I'll be taking a case study of mineral prospectivity modeling, and these concepts can be extended to all the other cases as well, other aspects as well. So these are the different data sources. So one most important problem that we have is we need data, at the same time we are My overwhelmed. request to everyone, please settle down. Please sit on your places. Please don't stand. We are overwhelming with the data. So how to process and analyze this data, so that is where machine learning comes into picture. So this is the workflow that we usually do. We have the data, we collect all sorts of data, and then we pre-process the data, we try to integrate the data, we try to make decisions out of this data. So one core difference of traditional approaches is that usually how we used to do this modeling earlier is based on the physics-based approaches. We'll have a model. You can look at the first diagram. We will have a model and we will have the data. So based on that, this model is already designed based on some physical processes, and we will get the output. But when it comes to machine learning, we are using data as well as the output to create a model. So the model is getting learned from the data. So this is something which is very different, because this advent of learning model from the data actually addresses many uncertainties associated with this entire process. So what machine is really learning? See, when we were kids, we were being shown apples and oranges, and we were able to distinguish between them. So we were distinguishing them based on the features, that means the size of the fruit, maybe the color, maybe the texture, maybe the smell. These all are features. So same way, when we talk about this mineral exploration, we have the data, and from that data we will extract out the features. And these features are being fed into the algorithm which can predict
the output. So these features, either we can directly take those features or we can synthesize our own features. So when we see, machine actually sees, we see the fruits like this, but machine sees it in a feature space, which is nothing but a scatter plot of different features. So when it comes to machine learning, there are different approaches. So as I told you, when we were kids, we were learning based on the positive and negative samples of apples to distinguish apple from other fruit. This is classification because you are getting a prior knowledge. But when it comes to, if you give some fruits to a kid, he will just, cluster it, or he will group it based on the color. But the problem comes, orange color means he will cluster it to orange, green means he will cluster it as mangoes. But the problem comes when you have a green orange. So that is where prior knowledge is needed. That is where, classification comes into play. So we have all sorts of these machine learning approaches, which we can use very effectively for taking decisions, for pre-processing all these data, huge bulk of data, because manually processing this data is very difficult. So that is where, in this feature space, the machine will be automatically learning a decision surface, which we can use. And there are, same like when we were a kid, we were getting a feedback from someone. When we say this is apple, they say, yes, this is apple. They will say this is orange, yes, this is orange. When we see an orange and say that this is apple, they will say that no, beta, this is orange. So that type of feedback will help the model to learn. That's how we learn, that's how the computational models also learn. So we have regression, we can use interpolation, and then nowadays we are hearing this term of deep learning. So machine learning means we are mimicking the learning process. We are trying to map the features to outcome. That means you give the output as well as the data, system will come up with a model that will map these outputs to the prediction. But here we are directly using the features. But in case of deep learning, we really learn both the features as well as the learning algorithm. So the features are also being learned by your machine learning model. So this is what distinguishes deep learning from other sorts of learning techniques. But here also we are having problems, because we can see that here these features are being learned and those features are being used by the model for classification. But the problem here is we have too many hyperparameters, we don't have enough data to train. So that is where the unsupervised learning techniques come into play. There are conventional approaches such as clustering techniques, self-organizing maps. Also, you can use deep learning in an unsupervised way. That means you will learn the features based on the available data without having any label information, and you will use that learned features for further processing. You can classify those features, you can interpolate those features, you can do all sorts of processing in that learned feature space. So that means you have an initial set of features, now you are learning a set of features. So there are different applications, different examples for such problems. So and one more problem now comes is, when we have two things, one is that physics-based models, which are very reliable because it's based on certain physics, certain phenomenon, physics or physical processes. But when it comes to machine learning models, so to some extent machine learning models will also, also will be okay. But when it comes to deep learning models, you don't know what feature the machine is learning. So for example, if I train a model with white cats and black dogs, and I will give a black cat, it will identify this as a dog. So that's a problem, because the machine will not be learning what you need. So this is very important when we deploy in conditions such as mining industry, because my previous speaker was talking about security and other things. So reliability of the model and reproducibility of the model are very important. So that is called explainability. So that's, here you can see that when the system is predicting, the dotted lines denote the important features of the spectra, and the red color indicates what the system is, what the model is giving importance to. So this type of explainable approaches are very important.
And then, you can have different case studies of using deep learning. We are extensively working on deep learning based reliable classification of this type of data. And also the spectral unmixing, where you can go beyond a particular pixel, because mostly minerals are non-linearly mixed up. So in order to classify it or to label it, it's very difficult. So you have to go beyond pixel level, go beyond your sensor limitation to unearth beyond a pixel. So these are some of the things that we did. We did with different deep networks, deep learning reliable networks. So spectral unmixing, enhancing the resolution, not only of here I'm just showing for the purpose, here I'm showing remote sensing images, but this is also equally important for all other data. So I'm not going very deep into the technicalities, but the basic idea is that you learn features from the data and use that feature space for enhancement. But the features should be reliable. Also, you can fuse different data sets. And then you also have this type of, networks which are now gaining traction. So these are like generative networks. So you can also generate samples from the data. So that means basically discriminative models or the classification models usually tell you, if you give an input, it will tell you whether it is belonging to this class or this class. But generative models can generate some samples for you. For example, many of you may be seeing these apps which can generate, faces for you. So some apps are there which will generate faces, how you would have looked if you were a girl. So these are all examples of generative models. So what is the use of those models in our domain is that when we have not sufficient samples, we can use these generative models to generate samples which can capture those, because especially we are working on the Chandrayaan 2 and 3 data where we are facing these type of approaches because we don't have samples. So you have to use the Earth samples to generate lunar samples. Also, one more, we talked about supervised learning where the kid is being supervised, unsupervised learning where the kid is, the kid is going by himself and he is grouping based on the similarities. But we have one more type of learning which is self-supervised. In childhood, we all know that we were learning not only based on someone's teaching, but also based on some positive and negative rewards. As a kid, when you behave rudely, you will get scolding. When you behave nicely, you will get chocolates. So it's a self-supervised. So when you get chocolates, you know that you will follow up this. So this type of self-supervised learning is very important for robotics, especially in the mining industry, and also for all these other type of models where the online learning is possible. See, earlier once you train a model, it is set there. When you use for other places, we don't know whether it will behave very well or not. So if you can update it based on this type of online learning strategies such as reinforcement learning, which is a self-supervised approach, so it's very beneficial. So we have different case studies of applying RL. And another very important, because GSI, we know that they are hosting a hackathon. So related to that, we had several discussions in the panel. So the main question was that you have a lot of reports. So what to do with these reports? Because reports or maps may be in PDF form. So analyzing or text mining this will be also another prior knowledge that we can utilize all these historical data into our processing. Yeah. With this, I'll just wind up my short discussion. Thank you once again for the kind opportunity. And this conclave is really a very nice initiative of bringing together people. I know it's a very short talk and I was running over due to the lack of time. But please be in touch if you want to know more about this. Once again, thank you all from the bottom of the heart, especially the dignitaries and all people in this room. Thank you once again for listening to me. Thank you, Jai Hind. Thank you so much, Arun sir. I would like to request to please be on stage and raise the dice. And I would like to thank Dr. Sandeep Goyal, Additional Project Director, MP SEDC Bhopal, Dr. Mohammad Danish, Chief Business Development Officer, ISM Startup Hub Taxman, and Shri Ankit Shukla, Head Business Development, Hexagon Mining, and for coming on stage and gracing the dice, and for the next technical presentation.
I would like to call Dr. Sandeep Goyal, Additional Project Director, MPSCDC Bhopal, and he's going to deliver his presentation on drone technology and remote monitoring. Honorable PS Sir, Director Sir, my dear friends on the dais and friends in the hall. My previous speaker talked about the technology, how the technology can leverage the facilities and how we can classify the objects which can give us the good governance. And in the morning, as our Honorable Chief Secretary Sir was talking, that was deliberating, that Madhya Pradesh is leading in technology nowadays for last many years, and ease of doing business and several other activities. So I would like to inform that Science and Technology Department, Government of MP, has got a state-of-art GIS and remote sensing facilities in the state, and we are one of the leading state where we are providing this support to other states and the national level agencies also. So coming back to the topic, what my previous speaker was talking, that how images can be classified. So I'll show you some real examples. So here we have developed recently a mining surveillance system. So all the mines which are being done, so now where these mines are being done and where the extension of those mining activities which are not legal. So you are seeing one of the satellite image over here at the screen, and the green color is the mine boundary which has been allocated, but there are several other areas where the mining activities are going on. So using the techniques what my colleague Mr. Arun PV was showing, the machine learning models, object-based classification, supervised classification of satellite images, we are able to identify the places apart from the 7,000 mines in Madhya Pradesh, what are the other areas where the mining activities are going on. So this is under the UAT, and soon we'll be going to launch. So this is going to be a support to the mining industry to stop and to curb the illegal activities which are going on beyond the limit by the other illegal mining mine doers. Similarly, then question comes, like it is already been discussed by the previous speaker, that how we go ahead. So we eliminate certain type of pseudo features which can contradict with the mining activities. The list is given here, and then we come to the conclusion that where the activities. Now you see the map, the mining activities, allocated mines are only green ones, but the blue one are the other activities which are going on in that area. So you can see. Now when we find out this, we are also, to govern the procedure, we are also having the system driven by the drones. What can we do with the help of drones? We can do the stock and pile and pit management, volumetric analysis, excavated area, volume analysis, surface. मध्य प्रदेश हिंदी राज्य है और मुझसे कहा गया है कि मैं कुछ हिंदी में भी बोलूं. फाइन, मुझे मेरी हिंदी अच्छी है, मैं बोल सकता हूं. ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हम अपने प्रदेश में उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं. हम टोपोग्राफी स्टेटस, एनक्रोचमेंट स्टेटस मॉनिटरिंग, माइन की क्लोजर एनालिसिस और रिपोर्ट. अगर कोई माइन अबंडन हो चुकी है तो उसका क्लोजर प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह की. और टीपी असेसमेंट फॉर ड्रोन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो वी आर डूइंग. सो किस तरह के ड्रोन्स हमें इस्तेमाल करने होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एसओपीज होनी चाहिए. आई एम प्राउड टू शेयर कि भारत सरकार के नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज़ में डिफरेंट सेक्टर्स में. मध्य प्रदेश उसमें एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा, जिसमें हमने उन्हें जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, वो इस फॉर्म में जो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमने हर एक सेक्टर में किस तरह का ड्रोन इस्तेमाल होना चाहिए और क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ये हमने डिफाइन करके वहाँ पे नीति आयोग को प्रोवाइड कराया, जो उन्होंने सिंगल बिड डॉक्यूमेंट सभी स्टेट्स के लिए जारी किया है.
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई माइनिंग हो रही है तो ड्रोन से हम उसका वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है एक्सकेवेट किया गया है। ये हमने माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ की थी इस स्पेसिफिकेशंस को और इस रिपोर्ट्स को डिफाइन करने के लिए, और ये अब विभाग के आदेश पे, शासन के आदेश पे हम इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में करने वाले हैं। रिसेंटली अभी हमने एक और वो किया, ये एनजीटी की कंप्लाइंस थी कि जो हमारे जून से लेके अक्टूबर के बीच में माइनिंग एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाता है, तो हमारा जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली कितना है। तो ये सभी स्टॉक्स की ड्रोन मैपिंग की गई और ये निकाला गया कि कितना स्टॉक हमारा एग्जैक्टली अवेलेबल है, कितना ग्रॉस वॉल्यूम है, कितना नेट वॉल्यूम है। ये सारी चीज़ें निकालकर विद द एक्यूरेसी ऑफ 95 to 98% हमने डिपार्टमेंट को दिया। सो आई जस्ट वांटेड टू शोकेस कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन लिवरेज द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइनिंग, हाउ वी कैन सपोर्ट, किस तरीके से हम इस पूरे गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो सुबह आज CIA के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा था, तो माइनिंग सेक्टर में भी इन सारी गवर्नेंस को, इन सारे प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए खनिज 2.0 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। और हम आपको बहुत सारे प्रोसेसेस जिसमें ऑपरेलाइजेशन ऑफ ब्लॉक है, जितनी परमिशंस हैं, उन सबको ऑनलाइन करने का ये सिस्टम तैयार कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट के साथ में, और जल्दी ही इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या आगे भी मैं अवेलेबल हूँ। मैं थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Now for the presentation of mining technology startup opportunities, I would like to call Dr. Mohammed Danish, Chief Business Development Officer, ISM Startup Hub, Texmin. Good morning, Namaskar. It's a matter of great prestige and pride that now we are speaking in Hindi. Let me also introduce and call my colleague Suraj Prakash, who is Texmin CEO, to come on the dais and join me for giving some deliberations on startup ecosystem. Suraj, please come forward. And my Hindi थोड़ी weak है, so my apologies for that. Yeah, Suraj, please. नहीं, बिल्कुल sir. So, yeah, please come. नहीं आप स्टार्ट करते हैं। नहीं हिंदी अच्छी हो जाएगी। हम लोग मध्य प्रदेश में पहले तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस टेक्समिन इन वन लाइन। इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। इट इज़ प्लेस्ड इन IIT ISM धनबाद एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर फॉलोइंग द सेम रूट एंड गाइडलाइंस जो आप लोगों ने सुबह बात किया था रिगार्डिंग जॉब क्रिएशन, रिगार्डिंग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, रिगार्डिंग माइनिंग एंड स्टफ, राइट। तो ये पूरा जो सेशन है, राइट, इज़ थोड़ा हम लोग उस पर ही उसी मतलब सोच को ही आगे बढ़ा रहे हैं थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। एंड दानिश इज़ द चीफ ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप्स की जब बात करते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि उसको ग्रोथ या सस्टेनेबिलिटी उनके तरफ से कैसे किया जाए, राइट। तो हमारे जो हब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो नीति आयोग के जो लोग हैं जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं पूरे इस प्रकरण में, तो वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इस सस्टेनेबिलिटी को अपना एक मूल आधार बना करके, राइट, माइनिंग में एक फोकस्ड अप्रोच रखें। तो इसके लिए पूरा प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंट किया। आप दानिश आप कंटिन्यू करें। सो ये जो मिशन है ये नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि स्मार्ट माइनिंग, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट माइनिंग, और जो भी हम लोग सॉल्यूशंस अभी डिस्कस किए हैं, जैसे अभी सर ने AI/ML के बारे बताया किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन या अलग फील्ड के लिए। अभी सर ने बताया ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में। यही सब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में कैसे बने, राइट, और यही सब बनने के बाद इंडिया माइनिंग कंपनीज़ को कैसे सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ, राइट। इस पर हम लोग कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स के जो तहत प्रणालियाँ हैं उनको यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो ये सर्टेन
some experience. Last time भी हम लोग यहाँ पे आए थे, उस समय कांता राव सर that was there, right? He was there. उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया था, and he has also come to the hub. And this is basically our overall structure कि किस तरीके से ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स हब्स बने हैं. पूरे कंट्री में 25 हब बने हैं हर सेक्टर के लिए. जैसे माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन के लिए एक सेक्टर के लिए एक हब बना, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी के लिए एक हब बना. तो माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन के लिए जो हब बना है उसका नाम टेक्समिन है. ये एक 7 मंजिला ऑफिस हम लोग को मिला है. उसमें हमारे बहुत सारे पार्टनर्स अपनी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी ये देश बिल्डिंग, जो नेशन बिल्डिंग हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जैसे हेक्सागन से अंकित जी है, ये भी हमारे साथ पार्टनरशिप में है. टाटा है, आदित्य बिरला ग्रुप है, मतलब मोइल हमारे, यस अब्दुल्ला सर. तो ये सारे लोग मिल करके देश में हम लोग एक क्रांति लाना चाहते हैं माइनिंग के फील्ड में. किस तरीके से हम लोग अपने ही टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके क्या हम लोग वो इफ़िशेंसी, वो जो मात्रक है, मतलब जो हम लोग जिसको हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ माइनिंग बोलते हैं, 3S 4S 6X माइनिंग, या वो सबको फॉलो करते हुए प्रोडक्टिविटी हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ये हमारा सोच है. मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ का हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेते हैं, राइट. आज आप हम लोग को यहाँ देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप हम लोग हमारे को या हमारे स्टार्टअप्स को माइंस में देखेंगे कि हम लोग माइंस के प्रॉब्लम्स लेते हैं. कहाँ से लेते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, टेलीकॉम है, मिटी है. गवर्नमेंट की जितनी भी हमारी प्रोसेसेस आती हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर 5G पर काफ़ी काम हो रहा था, और हम लोग को आया निर्देश की 5G टेक्नोलॉजीज़ पर आप माइनिंग का कैसे यूज़ कर सकते हैं. हम लोग को काफ़ी खुशी है, काफ़ी बात बताने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि IMC 2023 में हम लोगों ने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके माइंस को डायरेक्ट लाइव कर दिया था फ्रॉम द, मतलब जो माइंस है उसको हम लोगों ने दिल्ली में प्रतिष्ठित किया था. And we were one of the top 10 presentations out of more than 2,000, 3,000 companies there. These are some of the hubs and infrastructure that has been developed. Just a brief, ये video play होगा? These are some of the hubs, और ये जो हमारा infrastructure है, certain has been developed. Why we are showing this infrastructure is कि जब हम लोग बात कर रहे हैं माइनिंग का, तो हम लोग को ये देखना बहुत ज़रूरी है. जो अभी सुबह में सर बता रहे थे कि आपस में आप लोग अपना अपना कोलैबोरेशन से अपॉर्चुनिटीज़ देखिए. अब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग गाइड करें हम लोग को कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करें और कैसे हम लोग स्टार्टअप्स को ना इंकरेज करें इस पर्टिकुलर फील्ड में. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑलरेडी देयर. ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज़ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम, जैसे झरिया माइन फायर मॉनिटरिंग का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दीज आर क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, यहाँ माइंस की, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो जो हम लोग होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे बैठे ही हम लोग अगर माइंस को देखना चाहें होलोग्राफिक फॉर्म में, इमर्सिव विजुलाइजेशन फॉर्म में, तो हम लोग उसको देख सकते हैं. वीडियो टेलीमेट्री एंड ये सब सारी जो टेक्नोलॉजीज है, ये स्टार्टअप्स बनाए. वी वांट टू शो यू द पावर ऑफ इंडियन स्टार्टअप. दिस इज फंडामेंटली द ब्रीफ इन वन लाइनर थिंग दैट आई वांट टू बेसिकली शो हियर. जो हम लोग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज पे बात करते हैं, वी आर एबल टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम यूजिंग AI ML एंड अदर टेक्निक्स. और ये प्लेटफॉर्म बना के जिससे हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने इसमें स्टार्टअप्स, और आपको जान के खुशी होगी ये जो स्टार्टअप्स है ना, ये सब 2 साल 3 साल इतनी पुराने स्टार्टअप्स है. इन लोगों ने अभी फंडिंग मार्केट से भी उठाना स्टार्ट कर दिया है ताकि ये लोग और एग्रेसिवली अपने आप को ग्रो कर पाएँ. आप देखेंगे हम लोग कॉम्प्लायंस वी वर्क भी, जैसे DGMS के बारे आई थिंक सुबह किसी ने एक शब्द कहा था, DGMS रेगुलेटरी बॉडीज़ है. अब रेगुलेटरी बॉडीज़ के रेगुलेशंस को किस तरह हम लोग माइंड्स में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उनके लिए जो सॉल्यूशंस है वो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है.
उसके लिए जो काम है वो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। अगेन हमारे स्टार्टअप्स ने ये काम करके दिखा दिया है। एंड अभी हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को, एंड मल्टीपल बिग कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग विथ अस इन दिस जर्नी। इनफैक्ट वी वेर इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूके, ग्लोबल में भी एक तरीके का रेस चल रहा है, बट द रेस इज वेरी कोलैबोरेटिव इन नेचर, right? And we are getting that kind of collaboration support. So we will actually invite you all to also be a part of this journey of this nation building exercise जो हम लोग करना चाह रहे हैं। एंड सिंस जैसे हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश जब सब चीज़ का लीडर है तो आई एम एज्यूमिंग कि वो इस चीज़ में भी लीडरशिप बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स अपॉर्चुनिटीज़। In mine, shore fires are responsible for charging and firing shots. They must ensure safety procedures. ये देखिए, ये होलोग्राफिक अवतार है। इससे हम लोग किसी भी माइंस मैनेजर को इस तरह का एक होलोग्राफिक रूप दे सकते हैं ताकि वो अपना इंस्ट्रक्शन मतलब साइट में नहीं जा कर के भी दूर से भी दे सके, और इससे क्या है वो अपने ही भाषा में बात कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने माइनिंग जीपीटी लगा दिया है, और हम लोगों ने मीटी अप्रूव्ड डेटा सेंटर्स पे ही हमारे सारे डेटा पोर्टल पे रहते हैं, जिससे कि हम लोग बात कर सकते हैं। आपको जान के ये हर्ष होगा कि ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इवन वर्ल्ड में भी हम लोग सर्टेन जगह जाते हैं। जैसे ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, माइनिंग 4.0 के ऊपर माइनिंग ऑफ द फ्यूचर का प्रेजेंटेशन था, इस पर भी ये लोग भी काफ़ी खुश है। नाउ इंडिया इज़ बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स। जैसे सुबह हम लोग बात कर रहे थे माइनिंग का, और हम लोग ने अभी सर ने बताया है टेक्स्ट माइनिंग। सो दिस इज़ ऑल्सो माइनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप। जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट कि अभी टेक्समिंग के अंदर ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है हमें कि हमारे पास अभी 22 स्टार्टअप्स टेक्समिंग के अंदर हैं, एंड जिनको हम मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट दे रहे हैं, एंड ऑफकोर्स मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं। एंड 22 में से 10 स्टार्टअप्स आर गॉट फुली कमर्शलाइज, यानी कि हम उनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं सर। कोल इंडिया हो गया, OMC हो गया, अडानी हो गया, टाटा स्टील हो गया, ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हम ये प्रोडक्ट को डिप्लॉय किए हैं। एंड जैसे कि मॉर्निंग में एक वन जेंटलमैन वाज टॉकिंग अबाउट AI, ML, सर्वेलेंस, ये सारी टेक्नोलॉजी सर मेक इन इंडिया है विद ऑल दी कंप्लायंस रिजिड टेक्नोलॉजीज जो माइंस में अच्छे से काम कर रही हैं। सो अंत में बस ये कहना चाहूँगा मैं कि आप अभी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे में आप हमसे मिलिए, एंड स्टार्टअप्स में टेक्समिंग के सहयोग से देश को आगे बढ़ाते हैं सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है तो हम बाद में भी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. And now for the last technical session before lunch, I would like to invite Shri Ankit Shukla, Head Business Development, Hexagon Mining, and his topic is Mining Solutions for Digitization of Open Pit and Underground Mining. Very good afternoon, everyone. So, first of all, we are in a very good forum to discuss about the technology. And जैसा कि हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, हमको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए to make the nation proud. That is people, process and technology. People हमारे पास है, process हम बना रहे हैं, and technology from where I come from. So let us discuss about the solutions what Hexagon offers for the digital mining, be it open pit or underground. So let me just start with a safety share, because ultimately we all want to produce the tons, but हमें safety के साथ compromise नहीं करना है. So ये एक वीडियो हमने कैप्चर किया है हमारे collision avoidance device से, जहां आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक डंपर हॉल रोड पे चल रहा है और एक लाइट व्हीकल आ रहा है, एंड किस तरीके से हेक्सागन का सिस्टम इंस्टॉल होने के वजह से ऑटोमेटेड ब्रेकिंग के थ्रू एक लाइव हमने सेव कर सकी है। ये एक ग्लोबल केस स्टडी है। एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं एक डंपर मूव हो रहा है, उसने एक अनादर डंपर को क्रॉस किया है, एंड एक लाइट व्हीकल एक आ रही है। दोनों व्हीकल को अलार्म मिला एंड ऑटोमेटेड ब्रेकिंग के थ्रू उन्होंने ब्रेक लगा दिया।
So Hexagon basically is a MNC based in Sweden, and we are the, I can say, the only company who invest around 12% of the revenue in the R&D. And हमारे पास इंडिया में I can proudly say कि 40% जो global development होता है सॉफ्टवेयर का, वो हमारा इंडिया में होता है. हमारे 2 R&D सेंटर्स है, वन इन हैदराबाद, वन इन पुणे. सो जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, ग्लोबल सपोर्ट हम करते हैं, इंडिया से करते हैं. Hexagon not only in mining, but we have multiple domain operations, be it manufacturing intelligence, asset lifecycle intelligence, or geospatial, geosystems, agriculture, and likewise mining is a small part of it. So we are going to discuss about the mining. We have our head office in Gurgaon. Apart from Gurgaon, 14 different cities may we have operations. We have our team in Bhopal itself. So mining basically हम लोगों ने, rather not मैंने, पर आप लोगों ने at least इसका एक transformation देखा है from unmechanized to semi-mechanized, and then now we are calling it as a mechanized, and we are moving towards autonomous mining. So जो भी stages हमने देखे हैं, यहाँ पे Hexagon mechanized and autonomous mining में role play करता है, be it production wise और safety wise. ये हम कैसे करते हैं? वी प्राउडली इंट्रोड्यूस द पावर ऑफ वन. पावर ऑफ वन ये है कि हमारे पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपका माइनिंग में ड्रिल एंड ब्लास्ट, प्लानिंग, सर्वे, एक्सप्लोरेशन, जो भी आपके ऑपरेशंस चलते हैं, सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आता है. बाय यूजिंग अ सिंगल सेंसर प्लेटफॉर्म, एक सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं सारे इक्विपमेंट्स में, जहाँ से आपको डेटा गैदर होता है, एक सिंगल यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है. एंड इसी के साथ में जो हमारे एप्लीकेशन से ऑल आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर. सो बाय इंटीग्रेशन वी कैन सप्लाई द सॉल्यूशन फ्रॉम पिट टू पोर्ट. सो जो भी एरिया में आपका ऑपरेशन चल रहा है, सारे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है. एंड जो भी डेटा आपका होता है, आइदर आपके सर्वर में स्टोर हो सकता है और अ सिंगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हम स्टोर कर सकते हैं. So this image basically represents all the solutions what we offer for the mining industry. So right from mine plan, जहाँ पे हम हमारे सारी planning activities करते हैं, right from exploration data to solid modeling, block modeling, estimation, day wise scheduling, everything. तो सारा आप mine plan में कर सकते हैं. Then आपका plan बनने के बाद आप mine operate में जाते हैं, जहाँ आपका fleet management system पिक्चर में आता है, बी इट फॉर ओपन पिट और अंडरग्राउंड. फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम से आप ईच एंड एवरी बिट्स जो भी आपका मूव हो रहा है माइंस में, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं. विथ अगेन उसके जो एडवांसमेंट्स है लाइक मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड अदर्स, सारे इंटीग्रेट होते हैं. देन कम्स टू द माइन प्रोटेक्ट, जहाँ पे हमारे सेफ्टी सॉल्यूशंस पिक्चर में आते हैं, राइट फ्रॉम कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टू व्हीकल इंटरवेंशन सिस्टम, पर्सनल अलर्ट, different solutions. We also have the mine monitoring division where we have the slope stability radars. So अभी जैसे DGMS की गाइडलाइंस के तहत हम जैसे काम करते हैं माइंस में, तो स्लोप मॉनिटर करने के लिए we should have a proper technology in place. इसके लिए हमारे पास स्लोप स्टेबिलिटी रेडार भी अवेलेबल है. So mine plan we all know right from exploration as I discussed. I will skip it. देन माइन मॉनिटरिंग, जहाँ हमारा फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम आता है, बी इट फॉर ओपन पिट और अंडरग्राउंड. अगर आपका इक्विपमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी अगर आपको मॉनिटर करना है, आपका कौन सा इक्विपमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है, कहाँ उसका TPMS लो हो रहा है, सारा कुछ आपके सिस्टम पे अलर्ट्स के साथ यू कैन कीप ट्रैक ऑफ. एंड देन मशीन कंट्रोल एंड गाइडेंस. सो ये these are the different benefits जो आपको एक फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त हो सकते हैं. डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑडियंस आर already aware of it. Then let us discuss about the underground portfolio as well. So for underground, again, underground is like a black hole. We don't know कि आपके ज़मीन के अंदर क्या मूव हो रहा है, किस तरह से मूव हो रहा है. So उसी को ट्रैक करने के लिए for operations we have UG Pro, which is again a fleet management system. For safety we have the collision avoidance system for underground.
We have Minoware, which is drilling or the production optimization technology. And again, mine plan, we have a modules for planning as well for underground. I will skip this video. Let us talk about the mine protect. So these are the major causes of the accidents जो mines में हो सकते हैं. कभी हो सकता है कि दो हॉल ट्रक एक में से टकरा जाए, या एक लाइट व्हीकल आ जाता है बिकॉज ऑफ ब्लाइंड स्पॉट. कभी हाई ट्रैफिक होता है, कभी प्योर विजिबिलिटी होती है, कभी रोल ओवर हो जाता है. कोई भी रीज़न हो सकता है, एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकता है. हम एक कोशिश कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशंस के थ्रू कि हम किस तरह से उन्हें रोक सके. सो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली जो इमर्सेट के जो रूल्स है फॉर डिफरेंट लेवल्स. सो वी ऑपरेट फ्रॉम लेवल 7, 8 and 9, वेयर लेवल 7 इज द ट्रैफिक अवेयरनेस, 7, 8 इज द कोलिजन अवॉइडेंस एंड 9 इज द व्हीकल इंटरवेंशन सिस्टम. सो इसमें ये होता है कि लेवल 7 में आपको बस एक अलर्ट मिलेगा, विजुअल अलर्ट इन द टैबलेट एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. लेवल 8 में आपको अलर्ट के साथ एक ऑडियो अलार्म आएगा जिससे आपको पता चलेगा एक व्हीकल आपकी तरफ मूव हो रही है. इसमें आपको ये भी इंफॉर्मेशन आती है कि किस डायरेक्शन से व्हीकल आ रही है एंड कितने डिस्टेंस पे अवेलेबल है. लेवल 9 इज द व्हीकल इंटरवेंशन सिस्टम, जहां पे अगर ऑपरेटर किसी कारण तहत ब्रेक नहीं लगा सकता है या नहीं लगा पाता है, व्हीकल ऑटोमेटिकली सिस्टम विल टेक द कंट्रोल्स एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई द ब्रेक्स. जो आजकल हमारे सारे व्हीकल्स में एडास टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है, तो वही चीज़ हम माइनिंग में लेके आ रहे हैं. देन देयर इज अ माइन प्रोटेक्ट डिवाइस. सो एक इस साइज का एक आपका डिवाइस होता है जो कि कोई भी इंसान जो माइंस में जा रहा है वो अपने साथ कैरी कर सकता है. तो पर्सन को प्लस इक्विपमेंट को दोनों को अलर्ट मिलता है कि कहाँ किस डायरेक्शन में कौन अवेलेबल है. ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट्स का कि डंपर रिवर्स आ रहा है एंड पीछे कोई आदमी आ जाता है एंड उसको सेव नहीं कर पाते हैं. सो इस चीज़ को भी अवॉइड किया जा सकता है. सेम विथ अंडरग्राउंड, ब्लाइंड स्पॉट होता है, इंजुरीज एंड फैटल्स होती है. मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जहां हमको नहीं पता चलता है कि किस डायरेक्शन से क्या आ रहा है. तो वहां पे अगर कोलिजन अवॉइडेंस इंस्टॉल्ड है तो वी कैन डेफिनेटली सेव अ लाइफ. Then another cause is the fatigue of the operator. कभी हो सकता है प्रोडक्शन करने के लिए या किसी और रीज़न से या मल्टीपल शिफ्ट करने के लिए ऑपरेटर डबल शिफ्ट करने लगता है एंड वो फटीग में चला जाता है. उस रीज़न से भी एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं. सो इसके लिए वी हैव अ फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम जहाँ पे एक कैमरा इंस्टॉल होता है विद अ वाइब्रेटर इन द सीट. ये कैमरा आपका इमीडिएट रिएक्शंस तो कैप्चर करता ही है, प्लस ओवर द टाइम, लेट से 1 महीने तक आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को कैमरे ने नोटिस कर लिया, एआई ने उसको प्रोसेस कर लिया. तो कैमरे को पता है सिस्टम को कि आप कितनी बार पलक झपकाते हैं, कितनी बार आप यॉन करते हैं, कितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं. अगर उसके अलावा कुछ एबनॉर्मलिटी प्राप्त होती है तो सिस्टम आपको अलर्ट कंट्रोल रूम में भी प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटर को भी प्रोवाइड होगा. प्लस सीट में एक वाइब्रेटर लगा होता है, वो इस तरीके से शेक करता है पूरी सीट को कि ऑपरेटर ऑटोमेटिकली उठ जाता है. अल्टीमेटली किसी भी ऑपरेटर को ये चीज़ पसंद नहीं होती है, पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. लास्ट इज द माइन मॉनिटरिंग. सो जो हम बात कर रहे थे अभी स्लोप स्टेबिलिटी रेडार की. सो हमारे पास 360 डिग्री रेडार्स अवेलेबल है एंड विद द रेंज ऑफ फ्रॉम 800 मीटर्स टू 5 किलोमीटर्स लाइन ऑफ साइट. तो अगर आप किसी एक रेडार को किसी डंप्स मॉनिटरिंग के लिए इंस्टॉल करते हैं या किसी सेंटर लोकेशन पे इंस्टॉल करते हैं, सो वो 5 किलोमीटर तक की लाइन ऑफ साइट पे 360 डिग्री आपका डंप बेंच मॉनिटर करने की कैपेबिलिटी रखता है. देन लास्ट इज द माइन एंटरप्राइज, जहां पे जैसा मैं बता रहा था फ्रॉम पिट टू पोर्ट. So all the technologies, all the solutions are integrated to each other. अगर आपने माइन प्लान बनाया है, वो आपने फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम को दिया है, उसी सिस्टम में आपका कोलिजन अवॉइडेंस भी इंटीग्रेट हो जाता है कि किस लोकेशन पे, किस हॉल रोड पे कौन सी एक्टिविटी हुई है, आपको इमीडिएटली अलर्ट प्राप्त होता है. बस ये एक लास्ट वीडियो है
जो मैं चलाना चाहता हूं. Productive minds recognize that technology is essential to being smarter, safer, and quicker to respond to change. Hexagon integrates life-of-mind technology, delivering end-to-end solutions for its customers worldwide. Plan, operate, protect, monitor, analyze, and report on all mine activities. MinePlan delivers everything needed by an exploration or resource geologist to store, manage, and analyze drill hole data, perform geological interpretation of the deposit, and generate an accurate block model. Whether in a quarry, surface, or underground mine, MinePlan provides engineers with OP-CAD functionality to create and optimize 3D designs and activity-based schedules. Full virtual reality brings new and compelling dimensions to visualizing and sharing mine plans. Survey and scan complex field data into realistic and workable 3D models. MineOperate creates automated production cycles and operations workflows. Using mobile devices, it captures real-time, in-field data from across the mining life cycle. Daily production activities and equipment utilization metrics are captured and converted, ensuring continuous business improvement. High-precision guidance delivers accuracy and instantaneous feedback. Identifying machine health trends in real time improves efficiencies and reduces wasted effort and resources. MineProtect is at work in more mines than any other safety solution. Non-intrusive cabin display units and wearables protect vehicles, equipment, and most importantly, your employees. Integrated tracking prevents accidents caused by blind spots, driver fatigue, vehicle size, poor visibility, and busy traffic, and reports incidents in real time. Everyone goes home safely. Measure high walls and perform real-time slope monitoring using radar, total stations, and GNSS. Our geomonitoring hub makes sense of combined measurement results with easy-to-use software. So, बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप लोग भी लंच एंजॉय कर सकते हैं. जस्ट 2 more minutes. आई फॉरगॉट टू मेंशन, आप लोग अपनी माइंड्स में लाइका सिस्टम्स के हार्डवेयर यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हेक्सागॉन. सो इसी के साथ ये सारे हमारे माइनिंग सॉल्यूशंस हैं. अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो हम पोस्ट लंच ले सकते हैं. मैं आज भी अवेलेबल हूँ, कल भी अवेलेबल हूँ. लेट अस हैव अ डिस्कशन and take the digital journey into the mining industry. Thank you so much. Jai Hind. Thank you so much, sir. And thank you everybody present here. Hope these sessions and presentations are helpful in the growth of each and every one of us. Now it's time for a short break. But before that, I would like to inform you, there are different sessions which will be held in different halls. This is the Raja Bhoj Hall, and after the lunch break, we will be having a session on coal and power, limestone and cement, mineral beneficiation. And in Hall 2, which is upside, you can see the branding has been done, Hall number 2. So there the sessions will be on strategic planning and technology advancement in exploration, government initiative and critical mineral exploration landscape in India, and energy and hydrogen. And this side, there is a roundtable conference hall where we will be having the session of M-Sand and ready-mix concrete, and it's a buyer-seller meet too. So after the lunch break, we will be arranging here itself, and you can go to different sessions of your choice.